But Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajil farajum. Mu'minin wa mu'minat, let's please recite Surah Fatiha for كل مؤمن ومؤمنات اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم اللهم صل على بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه Mu'minin wa mu'minat, I want to offer condolences to everybody and especially to Bibi Fatima Zahra on this night of the 9th of Muharram, the night when your family, Bibi Fatima Zahra's family, our inspirations, our role models have been thirsty for 2 days now. And things are getting worse and worse in the camp of, in the Khaima of Imam Hussein. And I say this because we should continue to purify our intentions. Every day we ask Allah for more opportunities and more strength, emotionally, physically, psychologically, to give our all to these 10 days. And inshallah, Allah has given us the strength. And if you're tired listening to this broadcast, then you're succeeding. One thing to keep in mind is, for example, let's say you're at a program and they say, okay, stay for Matam, and you stay for Matam. You're expecting one Nahan, they put 3 Nahas on, right? And then you stay for Ziyarat, right? You might regret it at the time, oh, I'm going to lose Gane, but you're never going to regret. After you do it, you're never going to regret doing more for Imam Hussein. So even if at the time it's either, oh, I don't need to do this, I need to work, I need to, whatever's more important going on in your life, if you put that on hold for the sake of Imam Hussein, you'll never regret it. And in fact, the rewards are unlimited. So, Ya Allah, please purify our intentions, give us opportunities, and put us in positions where we will actually earn more sawab. Ya Allah, we're humans and we're dumb humans, to be frankly honest with you. Each and every one of us are not as intelligent as we should be about here or the hereafter. And so we have other priorities and other things that we're doing. Ya Allah, please remove all of that from us. And even if in our own ignorance and our own arrogance, we are trying not to do ibadat and try not to do azadari and forsa, make us do it. Make us do it, accept it, allow us to do more of it until our bodies are exhausted, and then give us strength to do it again. And take these deeds, accept these deeds, present it to Bibi Fatima, have her accept these deeds and hold on to them for us. Because one day we're going to stand in judgment in front of you, Allah, on the day of judgment, when no one's going to be there for us, except these deeds that we did in this world. None better than the remembrance of Imam Hussein, Prophet Muhammad, and the family of Prophet Muhammad. Sallallahu Muhammad. Tomorrow is Shukrat. We're going to have a program as normal tomorrow. Afterwards, we'll have short Amal. I think it's 2 rakat namaz with 50 times Qul Allah on each rakat, I believe. I'll double check. If I'm wrong, then I'll correct myself. But I believe that's the Amal. And then there's a ziyarat. So we'll do that live. It probably will be online. It may not be. We'll see. I'll try to keep it online. And then Ashura Day. We mentioned so many important things happen on Ashura Day. If you don't remember those important dates, then go back in the archive of Majlises and listen to it. Whoever recited the speech gave some very good information that day. So you should listen to it, the English speech. And so Ashura Day is a very good day to ask for forgiveness and to ask for your dua. What better way to ask for forgiveness, ask for dua, than to start your morning off with amals, which we'll be doing here live in person in Huntington Beach. It takes about an hour. Doing amals together is a lot of fun, especially on the day of Ashura, when everyone's been, the sense of community has been established and people have been seeing each other and focusing on what's right. And now Ashura's here and it's a weekday and everyone's off of work and we're all meeting up and doing amals together. It's always one of my favorite parts of Ashura. That and the Jalus, which, it reunifies us as Shia with the March of Bibi Zainab and Imam Hussein.
Let them know that we'll march with you anytime, anywhere for your mission. And then after that, we will have Faka Shikni, Majlis of Imam Hussein, and then kids program. Kids are always working very hard to do their part, and Ashura, you get to see their hard work and their commitment during these 10 days, and the amount of understanding that they get just by being in that environment really is really good. If anyone has kids who would like to participate, let me know. And then Shame Ghariba, and the uh, night will conclude with Dua Kamal program, since we're lucky to have Ashura on Thursday night. Um, it's actually told that the world is going to end on Ashura. Probably not this Ashura, you never know. But these are one of the important facts about Ashura. So make a list. Going into Christmas, people make their list of things we're going to ask. Make a list of things you want to ask Allah for, and don't forget, you have all day to pray, all day to pray, all day to ask, and whatever you ask will get granted to you. So please pray for me, my family, my marhum, my forgiveness, your forgiveness. Definitely pray for some of the Raza's forgiveness. Today's program will be recitation of Hadith Kissa. After Hadith Kissa, again, Tuesday, we're going to ask for tawassul from Bibi Fatima Qadara, Prophet Muhammad, Hazrat Ali, Imam Hassan, Imam Hussein. We're going to ask them for intercession. So though we normally, I don't know what you do during the duet tawassul when it's being recited, but tune in today and implore these amazing personalities, ask Allah for their permission to intercede on our behalf. If you're not going to ask them to intercede on your behalf, ask them to intercede on my behalf. I'll take that. But it's really important. I'm not making light of the prayer. I'm using a sarcastic tone to show us all how ridiculous we are when we focus on other things other than tawassul, Pursab and Mama saying Hadith Kissa, and I'll talk about a couple other things in the actual speech. This is just a pre-speech to the pre-speech. So after the tawassul, we'll have Marcia program, English speech, Urdu speech. Our main speaker, Maulana Syed Abid Bilgrami Sahab, will be speaking India, continuing to enlighten us and hopefully change our lives, better our lives. And after that, there will be Matum, Tabut Matum, and then Ziyarat. Bar Muhammad wa ala Muhammad Salawat. Let's please recite. I always say let's do this on our own. So and so is going to recite next. Recite Fatiha for the family. It's really important when somebody requests a Fatiha, you recite it. It's not wajib, but one day you're gonna be dead. Very, very soon you're gonna be dead. Like you might, even if you live to be 100, by the time you're dead, it's gonna seem like it happened very, very soon. So I'm gonna start the Fatiha with you. Inshallah, everyone's gonna continue it. We recite Fatiha for our marhum now. Maybe people on earth will recite our Fatiha for us when we die. And if you're watching this and I'm dead, recite my Fatiha, please, and for all the volunteers in this room and for the Zayed family. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajjal farajum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajjal farajum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajjal farajum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد وجه فرجهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وجه فرجهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وجه فرجهم. And now aloud Sabah for brother Jay Zahid to recite Hadith Kissa. Bar Muhammad wa ala Muhammad Salawat. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام
قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هوذي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري
ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتهية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وهي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وفقد الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. دعاء التوسل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد
يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله
Ya Hujjatallahi ala khalqihi, Ya Sayyidana wa Maulana, إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. Now your hajat. Ya Allah, please send blessings on Prophet Muhammad and the family of Prophet Muhammad. Ya Allah, please return Imam Mehdi to us soon. Help us be amongst his helpers. Ya Allah, please forgive the sins of our parents. Please forgive the sins of our marhum. Please forgive the sins of our family, of our neighbors, of Kul Mu'minin Mu'minat. Ya Allah, please forgive our sins. Please purify our intentions. Please help us go on ziyarat, on Hajj, on Umrah, visit the tombs of your beloved. Ya Allah, please help us not leave this world with any qazas, namazes, any qaza rosas, or any obligations to anybody, and any sins that we have not been forgiven for. On this night, Allah, forgive all of our sins and increase our opportunities to earn higher and higher status in heaven by completing better goods, better deeds, and doing more and more remembrance of Prophet Muhammad and his grandson, Imam Hussein, Bar Muhammad wa ala Muhammad sallallahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farjam. Ya Sadati wa Mawali, inni tawajjahtu bikum أئمتي وعدتي ليوم فكري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجونا جاءة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. चंद अशार हज़रत अली अस्गर के लिए मौला कबूल करें इंशाअल्लाह. बड़े बड़ों से बड़ा है हुसैन का असगर, बड़े बड़ों से बड़ा है
हुसैन का असगर बड़े बड़ों से बड़ा है हुसैन का असगर बड़े बड़ों से बड़ा है हुसैन का असगर गुरूर करती थी जिस हुर्मुला पे फौज यजीद गुरूर करती थी जिस हुर्मुला पे फौज यजीद उसी पे रन में हंसा है हुसैन का असगर बड़े बड़ों से बड़ा है हुसैन का असगर जो मांगना है तो झूले की सिमत आ जाओ जो मांगना है तो झूले की सिमत आ जाओ अमीरे करबो बला है हुसैन का असगर बड़े बड़ों से बड़ा है हुसैन का असगर कभी शहूर की आंखों से पढ़ किताबे अताश कभी शऊर की आंखों से पढ़ किताबे अताश वरक वरक पे लिखा है हुसैन का असगर बड़े बड़ों से बड़ा है हुसैन का असगर कदम उठा नहीं पाया मगर यजीद तेरे कदम उठा नहीं पाया मगर यजीद तेरे कदम उखाड़ गया है हुसैन का असगर बड़े बड़ों
से बड़ा है हुसैन का असगर। बिलाल अब मेरी कामत को कौन नापेगा। बिलाल अब मेरी कामत को कौन नापेगा। मेरी जबीं पे लिखा है हुसैन का असगर। बड़े बड़ों से बड़ा है हुसैन का असगर। सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला। Please recite a Surah Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه. Ya Allah, Ya Allah, I fear you. I fear you because there is nothing else that I should fear. For anything else that I may fear is not only your creation, but it's under your control. And I too is under your control. And though my future is under your control, you allowed me to make a choice. And this choice has consequences, consequences that you control, punishment that you designed, fire that you have made so hot that the hottest fire on earth feels like ice compared to the fire in hell that you have. And you made hell big, and you expanded it and created 7 levels of this hell. And you promised to fill it with people. Ya Allah, I don't want to be amongst those people. Ya Allah, I can't even handle the obstacles in this earth, Allah. How could I handle the fires of hell? I turn my face to you and I pray to you, Ya Allah. How could you burn this face that turns towards you? Ya Allah, I have no benefactor other than you. And no one else is the giver of life. No one else is the giver of death. Ya Allah, I've been talking about the things that you can do to me. Ya Allah, you as the giver of life and you are as the giver of death and you are the decider of how things turn out. I think about the things that I love and how they can all be taken away if that was your will. Ya Allah, you need nothing from me. You need nothing from me. No matter how much I praise you, it neither pleases you nor disappoints you because you are unmoving. You are an unmovable force, so you do not change at all. You have no need for anything that I do. So I don't know how much I could do to show you how much I love you. And I am ignorant and I am arrogant and I'm greedy. And so I do sin, Allah. I sin and I sin often. And I sin often forgetting about your bounties and how great you are. And for that alone, I shouldn't sin. Yet I do, Allah. So please forgive my sins. Please forgive my sins. And please don't burn me in hell, Allah. Please don't send scorpions in my grave because I use bad language. Ya Allah, please don't throw mountains on my head because I forget to wake up for namaz in the morning. Ya Allah, please forgive every sin that I've had and give me the intelligence to not repeat them. Please give me the intelligence to understand that the only thing that makes me happy is trying to please you. And the only reason I am able to please you is you allow me to please you. The only reason I'm able to praise you is because you created me with the tools necessary to praise you, and you let me know that if I praise you, you hear me. And because of that, I know that this praise doesn't go on deaf ears. No, it goes to the most powerful, most merciful, most beneficent being ever. I don't even like to call you a being because you are the creator of beings, Allah. All I know is that you are great, you are forgiving, you are loving and just, and you are my Lord. And I am a lowly servant, and I need to know my place. And every day you've given me an opportunity, every second you've given me an opportunity
to make that place closer and closer to you. And this day, on this 9th night of Muharram, Ya Allah, increase our nearness to you. On this 9th night of Muharram, Ya Allah, please give blessings to us. Open the skies and shower your blessings down upon us. Open the doors of mercy and grant your mercy to us. But not just any blessings, Allah. We want your choicest blessings, and you want your deepest mercy. And we want those types of blessings and that type of mercy that is only available to us when on our behalf you shower blessings on Prophet Muhammad and the family of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. You know, I think about the day of Ashura, and I think about a time when Imam Hussein had heard the voice of his grandfather in the sky. On the land of Karbala, he heard the voice that sounded exactly like the voice of his grandfather, the Prophet of Allah, the love of Allah, Muhammad, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. This is not the voice. This is not the voice of his grandfather. No, this is the voice of his son, Ali Akbar alayhi salam. This is the voice of his son who he loved so much. He loved so much for many reasons, and one reason was he looked exactly like the Prophet of Islam. He looked exactly like the Prophet of Islam. So when Imam Hussein wanted to feel close to his grandfather, he would call the son Ali Akbar to stand next to him. So why was it? Why was it? In fact, my daughter asked me this today. She said, why didn't Bibi Sugra go to Karbala? And I told her many reasons. She was sick and she was going to watch Benin. And I said that perhaps it was because she looked like Bibi Fatima Zahra, and Allah wouldn't be able to stand seeing the face of Bibi Fatima Zahra have her hijab snatched. To which my daughter replied, then why did Hazrat Ali Akbar go? Didn't he look like Prophet Muhammad? Yes, he looked like Prophet Muhammad. He acted like Prophet Muhammad. People loved him like they loved Prophet Muhammad. Imam Hussein loved him like he loved Prophet Muhammad. Obviously not more than he loved his grandfather, but he loved him with the passion that he loved his grandfather with, because not only did he look like the Prophet Muhammad, right? This was his son, and not just any son. He was a son like only Hazrat Ali Akbar alayhi salam could be. So it was necessary for him to be in Karbala that day and for him to be Shaheed, because I don't know if I've painted this picture for you, but Allah is beneficent, Allah is merciful, Allah is the greatest, and Allah is the most loving, and Allah is just. And Allah has made it very easy for us to go to heaven. Allah has made it very easy for the doors of heaven to be open for us and to walk through and give us many opportunities. You know, you follow ways, right? And it gets you lost, and you take a detour and it could take you half an hour. But Allah has made it so your detour does not take you half an hour to earn His forgiveness. Nay, you could earn His forgiveness at any second if you repent with your heart. At any second, if you have the intention that Allah, I'm never, ever going to do this again, right? And people wonder, about heaven and hell. Will I get there? Will I not get there? And if you submit to Allah, and if you start to find the truth will find you. And if you pray to Allah, Allah, send me the truth will find you. If you are part of a religion for your arrogant purposes, right? The Umayyads, Yazid, Muawiyah, Abu Bakr, Lanat on all of them, they wanted to be the leaders of the Muslim nation so they could exploit it for its wealth, so they could conquer nations, so they could be the man. I'm the man. This is my kingdom, right? But what did Imam Hassan show us? Imam Hassan showed us, you call yourself whatever you want. I am the king of the earth and king of the heaven. But they didn't have a responsibility to lead. No, they had a responsibility to keep Islam alive. You see, the prophets had to bring the message of Islam. Now the message was perfected. Allah said there's nobody who's going to bring a message after Prophet Muhammad. So what happens if the message of Prophet Muhammad died with Prophet Muhammad? What would happen? We would not have Allah's religion on the earth, right? So He entrusted somebody with it. He entrusted Hazrat Ali alayhi salam with it. He said, you teach people about my message. You show people the message. You make sure that the message never dies. You know, we keep hearing the proof on earth, proof on earth. The Imams are Allah's proof on earth. How are they Allah's proof on earth? They're men that are killed. What's that proof of? That's proof that no matter what you do, there's goodness in this world. That's proof that no matter what you do and how much atrocities you bring on somebody, goodness can always overpower. Doing the right thing is never the wrong thing to do. Well, that's profound, right? I just came up with that, right? But I'm sure you could find that on a sign at Michael somewhere. But that was original for my mind. So being
I forgot, see how good it was, but you should always do the right thing. Always, there's not the wrong time to do the right thing. I'm gonna keep going with these, but the thing is, if you have your conviction, right, no matter what happens, even in the face of death, you're gonna stand up for it, right? And so Imam Hussein, when he was in Makkah, he was asked by a traveler. He said, "Well, what if you're killed?" He said, "Why are you going why are you leaving Makkah?" And I'll get to that in a second. And he said, I'm going to fulfill my duty in Allah. And if I lived, then I was victorious. And if I die, then I was still victorious, right? Because it was his requirement, his obligation. He was Imam, right? The Imam is supposed to show people Islam. This is Islam. This is how you love Allah. This is how loving Allah is. This is how merciful Allah is. These are the things that bring Allah pleasure, or that Allah is pleased with. These are the things that Allah is not pleased with, right? This is how, that's the benefit of being Shia. We know how to do everything. We know how to mount a horse. We know how to get out of bed, right? These are all examples that we have how to do every single thing. So we can never stand on the day jumping and Allah say, Allah, yeah, I didn't know. I didn't know I'm not supposed to dress my animals up like humans and run around with them like Yazid did. I didn't know I'm not supposed to go to these ragers all night at this huge palace where people are getting drunk. People are drinking the best wine. There's the best food. There's women dancing. Man, they have this thing called music that we didn't have when Prophet Muhammad was here. And people move their butt. And oh my God, it's the greatest thing ever. And then they have these cards that we play and we bet money on it. Oh, it's ridiculous, right? You don't know what this is like, right? And that's what the world is becoming at the time of Yazid, at the time of Muawiyah, right? Muawiyah had used military strength and greed and politics to get the people to see something else, right? They were seeing, the Khalifa of Islam sacking these cities, and look how wealthy we are because we're Muslims, and other nations fear us, and we have the biggest army, and now we have these great things. Oh, look, it's like when they got, I remember our first color. Look, we have color TV, right? All these things, right? All these things that are distracting us from our day to day. These 10 days of Muharram. When I was a kid, I used to not watch TV in Muharram and stuff. I hated it. I was mad at my parents for it. It was like the worst thing that ever happened to me was Muharram coming, right? First 10 days were fine. And then after that, it'd be like, come on, so they're twiddling my thumbs, right? So this year I'm telling my daughter, say, you know what, we're not playing video games, not watching TV in the 10 days of Muharram. And as soon as the words came out of my mouth, I was like, maybe I'll watch TV in the 10 days of Muharram. But I told her we're gonna do this. And she's been doing it. My kids have been doing it. And because of that, I'm like, okay, I don't need to turn on Sports Center either. And the reason why I'm bringing this up is to say that my day is filled with so many different things, right? That I wouldn't be thinking about or doing before. And see, that's what started happening in the world, is all these other things that were distracting people from the truth started becoming the norm. Yes, it is true. People started drinking in Makkah, right? People started listening to music, right? This is the new hot trend, right? People, it's like when CDs came out, when the Walkman came out, everyone, hey, I could take my music to go, right? Back in these days, they didn't even have music. A lot of people hadn't even heard it, but Yazid loved it. He brought it from Syria, right? So now people are listening to it, and it's not just people. This is the Khalifa. This is the leader of the Muslim world, drinking, listening to music, gambling, right? It's so much fun to do here, and he tells us everything's gonna be fine. He would send his women, after being with them all night, to the masjid to lead namaz in his shirt in the morning. Just go lead namaz, dude. I'm too hungover to lead namaz. You go. And this is happening in the Muslim world, right? Do you know that namaz was a gift that Prophet Muhammad was given to bring down to his people at the day of Mi'raj, right? He went to go. He walked past creation. You see, Allah is uncreated, and creation had to start somewhere, right? It blew my mind. I don't know if I'm going to do a good job explaining it, right? Creation starts somewhere, right? And so Prophet Muhammad, Hazrat Jibreel took him to a spot, and he's like, I can't go farther than here. No creation has gone beyond this spot right here, right? So Prophet Muhammad, I don't know if there's nothing created, but he entered a spot where there was no creation had ever been. There's only Allah. And as we know, Allah is uncreated, and there's nowhere where Allah is not. So to even fathom that this is where creation starts, and this is I can't even do it. But he went to a place that nobody had or anything had ever been to, right? There's a closest to Allah that anything or anybody had ever come to, right? And actually, he said that Allah had spoken to him with the voice of Hazrat Ali alayhi salam that day. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. An angel started to fill the sky, right? Allahu Akbar, Allahu Akbar. This is what Prophet Muhammad is speaking to Allah, and they're having a conversation, and he's asking questions and getting answers, and who knows
what was said that day. We know some of it, but a lot of it were between Allah and His love, Prophet Muhammad. And angels start speaking, Allahu Akbar, Allahu Akbar. And Allah says to Prophet Muhammad, it's like, he is right. I am great. Ashhadu an la ilaha illallah. And Prophet hears this. He said, he's right. There is no God but me. He's telling Prophet, he said, the angel's right. There's no God me. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. The angel's right again. There is no prophet. You are the prophet. You are my prophet. Right? He's telling Prophet Muhammad, and Prophet Muhammad's listening to all this, right? Ashhadu anna Aliyun waliyullah. This is when he heard about Ghadir. This is when he heard about the succession of Hazrat Ali. He had known about it, but this is the first time it was confirmed to him by this angel saying, he's right. Hazrat Ali is your successor. And, hayya ala salah, hayya ala salah. He's like, he's right. It's time to pray. Go pray right now, right? He's a problem telling his friend. He's like, right, let's go pray. Allah Akbar, yeah. Allah is great. Go pray. So at this time, how do people do namaz? How do people do namaz? Is you'd go behind the most pious person and you do what they did. That's it. There was, time to way to pray with Hazrat Ibrahim, with Hazrat Musa. As we know, Hazrat Ibrahim said, this is the house of God. He died, and the people started putting idols in there because, hey, God's not at his house. Let's go move this God in, right? And so people forget things, right? So we don't know how Salat was prayed, but you would go behind the most pious person and do what they did. Say what they said and do what they did, and hopefully Allah would be accepted by Allah. So now, Azan was just given. Hayya ala salah was just given. And Allah told the Prophet to pray. So what did the Prophet do? Right? Allahu Akbar. Yes, I am great. He's like, now recite from my book. And Prophet Muhammad started reciting, Alhamdulillah Rabbil Alameen. All praise be to Allah, the Lord of the world. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. He recited Surah Hamd. And you think about this moment, I'll talk about this moment in a second. He recited Surah Hamd. And Allah was pleased. He said, yes, now recite another surah. Right? Recite another verse. And that's why you can't recite Alhamd twice in the rakat, because Allah instructed Prophet Muhammad to read another verse. So he read another verse, right? And then, right, after that, he fell to prostration, right? He was reciting Quran to Allah, and Allah accepted it. And he fell, his humility, he fell to bow to Allah, right? Subhan Rabbil Azim wa bihamdih, right? All glory be to you, the greatest, right? And then he got up and he realized he had been praising Allah, and Allah listened to him. Sami Allahu liman hamida. We praise you and you listen to us, right? Prophet Muhammad acknowledged this, right? And he went down into sajda. He wanted to get even closer to Allah, so he went down into sajda. Subhan Rabbil Allah wa bihamdih. All glory be to you, the highest, right? And then he sat up and he started to remember. He started to remember his place and how great Allah was, and he implored Allah to forgive his sins. Astaghfirullah Rabbi wa tubu ilayh, right? He was overwhelmed with the gravity of what was going on and prayed to Allah to forgive his sins, and Allah accepted. So he felt the prostration again. Subhan Rabbil Allah wa bihamdih. And then the Prophet wanted to raise and he wanted to pray some more namaz. So he asked Allah for permission to get up. And he got up very, very gingerly, right? Very didn't, right? He got up very, it's Allah's presence. And he stood up, right? And Allah told him, recite a verse, and so he started reciting Surah Hamd again, praising Allah again, and Allah accepted it. That's why you recite that in each rakat, right? Because Allah accepted this in each rakat. Now you think about what happens, right? It teaches you, all praise be to Allah, right? Maliki Yawmiddin, master of the day of judgment. 10 times a day you are reminded. If you forget about the day of judgment, Allah made sure Prophet Muhammad tells us to remember twice a day, I am the master of the day of judgment. There is a day of judgment and I'm the master. Oh, and I'm the only thing you praise. There's Surah Hamd has a lot more to it than that. But these are the the generosity of Allah, that He wants us to remind us of this, because we have other things going on, right? We have the Nintendo Switch going on. We have Call of Duty going on. There's basketball going on. You know what I mean? Well, whatever happens, all of this stuff needs to go down today. But Allah says, remember, there's a day of judgment one day, and I'm the master of it, right? Twice in namaz, 5 times a day, right? And then, he offered salam. Right, he offered salam, and he completed after he had done the second rakat, Allah told him, he said, now implore me. He said, you are closer to me now than you've ever been after the second rakat, right? And he said, now implore me in your needs, ask for me what you want. And Prophet Muhammad raised his hands and he asked for dua. And that's why we ask for kunut. You are closer to Allah than you've ever been after the second rakat of
focused namaz, and you come up and Allah, you're standing under Allah's throne asking him for whatever you want. So he asked for kunut, right? And then he completed the rakat. And then he completed the rakat and he stood up after he did salam again. And he tried to recite something, but he was too blinded by the nur of Allah. So he closed his eyes and he said, Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Repeated it 3 times, right? And then that's why we recite that silently, right? And then namaz was finished, right? Namaz was finished after the 4th rakat. And Allah said, now go and pray this at Beit al-Mamur in front of all of the prophets and all of the angels to teach everybody that's ever recited namaz the proper way it's done. To show anybody who represented me, right? This is how you do namaz. And he did that. And then he went to earth. And when he went to earth, there was a caravan going to Medina, and he joined them and did Fajr namaz with them. You see, this is a gift of that Allah had given to Prophet Muhammad, who had given to us. And now namaz was being erased from the books of history. The books of history. Muawiyah had gone and done Jummah namaz on Wednesday. No, everyone was too scared to say anything, so they didn't say anything, right? And Yazid, who liked to throw these ragers, who liked to drink, who liked to dance and gamble and do all these amazing things, right? Didn't pray namaz, right? And too drunk to do Fajr namaz, and so all those people are like, I guess we ain't doing Fajr today, right? And this was what was going on in the Muslim world, right? Right? It sounds pretty bad, right? Let me tell you what else was going on. Yes, there were people who followed Imam Hussein before his martyrdom. There were people who loved Imam Hussein, a lot of people, and they would do namaz properly, and they wouldn't drink, and they wouldn't gamble, and they wouldn't dance. And you know what started to happen to them, right? Even though part of the treaty that Muawiyah had signed with Imam Hussein said he's not gonna oppress or kill or harm the people who love Hazrat Ali alayhi salam. Some people's names were in there, and those people's names too, they were killed. Their limbs were removed from their bodies. Their limbs were removed from their fingers were cut off every time they said Ya Ali, right? They were whipped, they were stretched. Every single form of torture you could think of happened to the lovers of Hazrat Ali alayhi salam during the reign of Muawiyah's Khalifa and Yazid. The people, the Muslims who were sitting in their houses scared of leaving the house and getting murdered. They were scared of letting their kids go out to play because their kids were getting murdered. They were scared to leave, to even let people, their servants in to clean their house and cook for them, because they would go rat them out and people would come and kill them, right? We're waiting for the Imam, aren't we? Isn't it said that that's what's going to happen to Shia? Isn't it said that that's what's going to go down? You know, my daughter asked me one day, she said, who's that guy that's going to come and hurt us? And I said, Dajjal. No, Dajjal's going to come and say he's your friend. No, the other guy. I said, Sufyani, relative, descendant of Abu Sufyan, will come. He will be on earth, might already be here, right? And how's we were going to bring him the heads of people named Ali and Zainab and Sakina, and the heads of people named Hussein, and it was the heads of people named Ali and Muhammad, right? And they're going to get more money than they thought. And I said, how could you do that? Isn't that illegal? I said, okay, let me ask you a question, right? I gave her a number of scenarios to break it down to this, but this is the most profound one I said, right? If everybody's watching TV at 6:30, 7 p.m., whatever the most popular time is, on their phone, whatever, and all the signals are now intercepted, and there's one message, and it says $1 million for the head of somebody named Ali, right? Maybe that'd be enough, right? But somebody said, well, maybe if they got amnesty where they wouldn't get arrested, right? Okay, what if they said 5 million? What if you said $10 million for the head of somebody named Zainab? And how many people say, you know what? I'll go to jail. I'm taking care of my family, right? Somebody might, we have knocks on our doors, right? Think about that. Right, we're calling our Imam. The Imam's gonna come. We're ready. The Imam. We're ready, sitting on couches. We're ready, drinking smoothies. We're ready, driving in our Teslas. Right, we're ready for you, Imam. Right, we're ready for you, Imam. But what's gonna happen when the Imam comes? The state of the world is gonna be worse than it's ever been in before. Right, the Muslims are gonna be persecuted more than we've ever been before. And at the time of Imam Hussein, if you were Muslim, you're getting your head cut off, and that's that. Right? Are you ready for your Imam? I'm not trying to scare anybody, but we should be ready for it. And you want to know why Imam Hussein did what he did? Because they were cutting the heads off of his followers, off of his family, and it was his responsibility to make sure that the laws of Islam are always on this earth, right? Even if I have to die, I have to make sure the laws of Islam are never. My grandfather brought namaz for you guys and for all of us, and now they're not praying namaz. And this is not what Muslims do, right? So what did he do? He said, okay, fine. You think you're the king of all of this, right? All this wealth that my grandfather, him and his wife, my grandmother Khatija, built this Islamic nation out of their own pocket. You stole my mother's inheritance and you put it into your kingdom, and you go bloody other countries and say this in the name of Islam. Fine, this is my home. You take it. I'm gonna go. He didn't just go anywhere, right? He's leaving his town, so he want to go visit the house of Allah, the house his father was born in.
and he went to Mecca. And he goes to Mecca, right? The governor there, he was a pious man, but he was also a man who had aspirations of becoming the governor of Mecca, right? Zubair ibn Qayn, right? When Prophet Muhammad showed up, he greeted him, but he wouldn't go and visit him. He kind of, he just didn't want to disrespect the, Imam. And he wasn't too happy the Imam was there, because if the Imam stayed here, then he'll probably be governor and I won't, right? So it was going through his head, right? And so, in Makkah, as you know, right, very sacred place. You're not supposed to kill a bug in the area of Makkah, and people probably do kill bugs, but Imam Hussein didn't, because that's the law, right? And so as Hajj was approaching, right, the letters from the Kufans are piling up, right? Like we call our Imam, right? Adrikni, al-Ghath, right? Do I faraj? They're writing letters like that to him, come right away, read the letters. They're writing exactly, do I faraj? They're writing to, calling to, we cry, we recite, that's what they're writing to the Imam. And he received these letters, and he said, okay, you know what? And actually, at this time, people were starting to support Imam Hussein. He was in Makkah, people are coming to visit him. He actually called Zubair ibn Qayn when they called him to his quarters and spoke to him and said something to him, right? And after that day, he was always behind the Imam, and always be seen talking to him, right? And so the support for the Imam was raising, right? Support for the Imam was raising. The people of Kufa said, hey, we'll give you sanctuary here, right? You won't be in danger here. And so for the betterment of Islam and the Muslim Ummah, he left Makkah. He didn't want to get arrested nor killed, so there would be bloodshed in Makkah. He knew that if they tried to shed his blood, people would stand up for him, and all of Makkah would become a bloodbath, right? And so he didn't want to disrespect the Kaaba. And plus, there's people calling me. I'm their Imam, and that's why I say, call to your Imam, just like the Kufans call to Imam Hussein. We should call to our Imam. Right? Come right now and help us, because Islam is getting distorted, and there's, we're being oppressed. We're being oppressed all over the world, right? There's people, Afghanistan, Iran, Pakistan, right? Where are we not being oppressed? China, there's people who love Prophet Muhammad. They're being oppressed everywhere. We're so lucky we're sitting here, in our air conditioner, whatever we're doing, we're not getting oppressed the way they are right now, right? But it's gonna happen, because this is the hadith, this is the advice from Hazrat Ali alayhi salam, from Prophet Muhammad, that Imam's gonna come at a time when Muslims are in the worst state ever. And at this time, they're getting killed in Medina, in the very town that Imam Hussein grew up in. And so he left Makkah and went to go help the Kufans, answer their calls, right? Answer their calls. Okay, they're calling me. Let's go, right? Got all of them. They started to walk towards Kufa. And then when they received news of the martyrdom of Hazrat Muslim bin Aqil, and then, Hazrat Hur came, and, Labbaik ya, you help Imam Hussein, and you get heaven, right? You think that's a ridiculous thing? Hazrat Hur, I told the story the other day. I'm just going to touch on it, because I thought of something after that. Is he helped Imam Hussein, right? He didn't kill him right away, right? But also, he said, look, I either have to, I can't let you go to back home, and you shouldn't go to Kufa. There's soldiers waiting for you. He said, go somewhere else. Just take another route, and I'll figure out what to do. You see, even in his fear and his lack of commitment, he helped Imam Hussein, right? He helped him out. And look at today, we tell his story. We tell Maulana Sayyid Abid Bilgrami is going to tell the story tomorrow night on Ashukirat. On Ashukirat, you're going to hear the story of Hazrat Hur alayhi salam, a man who kept Imam Hussein from getting water. But look, he helped Imam Hussein, right? Help Imam Hussein. Every little bit of help you could do is going to help you. Help Imam Hussein. Help him. Help his mission. See, if the Yazidi government would have, the Umayyads, they ruled the Islamic government. They said 1,000 months, I think, right? They were in power for 1,000 months, right? That's a long time, right? In power for 1,000 months, they could have erased the history of Islam, right? Azan, we still say Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah because of Imam Hussein, because of the stand he took, because of what he did, right? Because of men like Zubair ibn Qayn, right? Because on the morning of Ashura, right, he sent Hazrat Akbar alayhi salam to remind people, right? This is what the Prophet looked like. This is what he sounded like. This is what he said. And this is what I stand for, right? And that's why on the day of Ashura, the Shimmer, was trying to, he really wanted to, kill Imam Hussein. He was probably the person there that wanted the most to kill Imam Hussein was Shimmer, right? He was like a rabid dog, just like waiting, right? And what had happened was Hazrat the boss, Hazrat Ali Akbar, commanding your army, right?
commanding your army. They could be commanding army. I could be, and it'd be the best army ever because they're that kind of commanders of armies. You see what I'm saying, right? Somebody, lack of skill and coordination like me, and their army would be better than any trained mercenary because with their direction, there's nothing anyone can't do. And so, what do you think was happening? Thousands of soldiers, hundreds of soldiers are coming, trying to attack the right flank, and hey, where'd they go? Where'd our soldiers go? We're bin Saad. Oh, look, these 72 men just they're done. They're being commanded by Imam Hussein, Hazrat Ali Akbar, and and Hazrat Abbas alayhi salam. So where do you think they went, right? And this is driving them crazy. What happened? What happened in Kufa when Hazrat Muslim bin Aqil was taking hundreds and hundreds of soldiers out? They tried to smoke them out. They threw smoke into fire into the house, and he got too congested with smoke. He had to come out. So they tried to do this, right? They tried to do this. Shimmer got on his horse and he rode straight to the tent of Imam Hussein, and he cut it with a knife. He cut it with a knife and said, "Give me fire. Give me fire. I'm going to smoke these people out," right? And Zubair ibn Khayn was having none of this. He got 10 men, and he got these 10 men, and he went in front of the tent, and he defended the tent, and Shimmer had to back his people up. He had to back his people up because Zubair ibn Khayn was not allowing this to happen. Not allowing this to happen. And then when Hazrat Hur went on the battlefield, who went on the battlefield with him? Zubair ibn Khayn went on the battlefield with him. He went on the battlefield with him, and they defended, and they fought, and they did their jihad, right? And then Zubair ibn Khayn, he wanted to go and see how long he could hold off the enemy for. So he asked Imam Hussein for permission. He asked Imam Hussein for permission to go to fight, and Imam Hussein had granted him this permission. And Zubair ibn Khayn, he entered the battlefield. And he killed 20, 30, 40 soldiers, and it was Zohar time. It was Zohar time. And so what happened? What happened is he said, Imam, I want to keep fighting, but it's Zohar time, right? I want to keep fighting, but it's Zohar time, and I want to pray behind you one last time. No, now they say the Imam did namaz while riding a horse, and the Imam, right? There is namaz that you recite if in times of dire straits. I forget. There's namaz-e-khawf that I'm going to talk about right now. I forgot what the name. I'll remind everyone tomorrow, right? But there's a namaz when you are being attacked. If you're on a horse, if you're in a car, let's say if you're in a tank, right? This is only for time of attack. Not like I'm getting late to work, let me recite this namaz. No, wajib namaz is to be recited properly. Pull over and recite it, right? But if your life is in danger, this is how you recite it. You can even recite that. That's how, and things like, ruku and sajda and the movements are excused. Qibla is excused, but, wuzu might be, right? But you have to still recite namaz. But that's not what they recited on the day of Ashura. No, they recited namaz-e-khawf. Namaz-e-khawf was taught to them and to Imam Hussein by Prophet Muhammad. They would do this during war time with Prophet Muhammad. And the way you recite namaz-e-khawf, well, first of all, the way they recited this day is there were two people who would stand in front of the congregation, right? Stand in front of the congregation. And behind them was the Imam, right? And their purpose was that arrows should not reach the people praying namaz, nor should reach the Imam, right? And so Imam Hussein, prayed namaz behind them. Now, anybody, let's say that they're, I'm in Huntington Beach, and let's say that, the stuff goes down in Huntington Beach, right? And I'm going to go see what's going on, right? And there's oppression going on and oppression being fought against. And as a Shia, I'm going to go fight against this oppression in Huntington Beach, right? And then, and then Maghrib time comes, right? And we're going to pray namaz. Though I'm in Huntington Beach, I still pray Qasr namaz, right? That's one of the things about namaz-e-khawf is you still pray Qasr namaz, right? So this is Zohar time, so there's 2 rakat. Now, the way this is prayed is half of the army lines up behind the Imam, and you recite the first namaz-e-jamaat, and then the next rakat, they recite it silently and excuse themselves, and then the next army comes in and recites their first rakat as the Imam's second rakat behind the Imam, right? And so this is the namaz that was going on. And this is the namaz, this is the dedication to namaz that Imam Hussein was trying to preserve. The Maulana said last night that people at this time, they were looking, trying to pray Asr namaz, and the people on the other side were saying, hey, let's hurry up and kill him, Hussein. We need to go pray Asr namaz. Your namaz is going to get kabuled after you kill the grandson of Prophet Muhammad, right? So this is how Islam was being distorted. Now people were being killed. Islam was being erased from the earth. The rules of Islam that we have this day. I talk about how easy it is to get into heaven. If Imam Hussein did not stand up for Islam the way people say what could have been, there's nothing else what could have been. There's no what if Imam Hussein did this, or what if Hazrat Abbas did. There's no what ifs. In the world, there are no what ifs because Allah does everything perfectly. And if this is how it panned out, this is how it's supposed to be, right? And because it panned out this way, we can sit there and listen to Hadith Kissa this day and call ourselves winners. Now, we wouldn't have that.
right? There might still be people on earth wandering around looking for the right path. How do I praise you, Allah? Allah, which book do I read, the Bible or the Quran? Yeah, because there would always be people who turn towards Allah. Always be people who turn towards Allah. But the path to heaven would have been erased from this world. We might be among those ignorant people, drinking wine and playing cards and gambling, right? We might be amongst those ignorant people missing namaz because this might be the stuff that we value, right? People do sins. I'm not going to stand here and judge, right? But what I'm going to say is they were proud of doing this stuff because to them there was no hereafter. There was only here, so let's have fun here. No hereafter. You hear people saying that now, right? Oh yeah, well, YOLO, YOLO. Let's go do this. Let's go do that. YOLO. YOLO means you only live once, right? Yeah, you only live once, right? Let's live now. Let's go do the stuff now. You know what I mean? Let's go skinny dipping now. Let's go, do shots of whatever now. Let's go, let's go, bet on horses now. Well, whatever people want to do, that's their YOLO. Let's go, right? But because of what I'm saying, we know we don't just live once. We don't just live once, right? Life doesn't just end. No, you go to a greater life and a greater existence, and that's where the sacrifices you made here. Imam Zain al-Abidin said that the purpose of this earth is to get the tools that you need, the supplies you need on your in the hereafter, right? We're grocery shopping here. We're out, we're at some ghetto Walmart where they don't have cool stuff, but we don't realize that because we live in the Midwest and everything looks so cool, right? And so, whatever you want to grab, right? Whatever you want to grab a Quran, right? You want to take an alam with you, right? Or do you want to take your iPhone, a cable box and a smoothie, right? What are you going to take with you when you die? What are you going to value? You see what I'm saying, right? What are you going to value, right? And Allah's given us this clear answer, right? And even the people in Karbala that day, they had the clear direction, right? Okay, Imam Hussein said his lineage. He told you he's not here for revolt. He said he's here for peace. He said if you don't believe him, let him leave. He had somewhere to go, right? Sheher Banu, his wife, his late wife, the mother of Imam Zain al-Abidin, she had a sister named Meher Banu, right? Sheher Banu had married the king of the world, Imam Hussein, and Meher Banu had married the Raj in India, right? And so he wrote a letter to him asking for, safe passage to India and saying, that I might need some help. So what did he do? He sent his best soldiers to go and help Imam Hussein. They got there a little late, right? But he had a place to go. He didn't need to be in Karbala. He didn't need to be in Kufa. He didn't need to be in Makkah, Medina, right? So willing to leave to show us that I'll go to the ends of the earth to teach the religion of my grandfather, right? And so that's why it's important that people, they didn't believe any of that. So fine, see this boy, he looks like Prophet Muhammad. He acts like Prophet Muhammad. People loved him like Prophet Muhammad. It is said that after he got permission to fight, after Imam Hussein had given him permission and he was leaving, he had to come back. Bibi Zainab, Kulthum, all of these women were calling him back, and they were embracing him, and they were telling him prose and touching his hair and massaging his shoulder and crying and telling him how much they loved him, and he left. He had to come back because people loved Hazrat Ali Akbar the way that they loved Prophet Muhammad. This was one of the rahmats that Allah had given Hazrat Ali Akbar alayhi salam. These women, they loved him, and he was the last young man that was left after him. The ages started to get lower and lower. Janabi Qasim, who was Shaheed shortly after him, right? And so the age of the Shaheed was getting lower and lower. And this young man of 18, he was going to the battlefield. And yes, what a soldier he was. But as I said, he was not only trained by Hazrat Abbas, he became his apprentice, right? They would teach people, war together. He helped them command the army on the day of Ashura. And his father, he went to go see his father, and his father helped him wrap his turban. And his father had tears in his eyes, and he said, "Father, why are you sad? You know that we're going to be walking into Jannat soon. Why are you sad?" And he said, "You'll never have a son, and you'll never have a son like I have you. So you'll never get to understand the sadness I'm feeling right now and what's about to happen." And Hazrat Ali Akbar alayhi salam, he didn't want his father to be sad. He wanted his father to be proud of him. I am a man, and I'm defending for Islam, and I didn't want his father to be sad. So he got on his horse and he started riding towards the field. And as he was riding, Imam Hussein's running next to him. I think about the day of Ashura when Hazrat Ali Akbar alayhi salam gave adhan. At the beginning of this program, I could barely speak. I was very tired. I drank at least 4, 5, 6 glasses of water today. Hazrat Ali Akbar alayhi salam, Imam Hussein alayhi salam, they hadn't drank water in days.
probably longer than the 7th day, because they knew the water was running out. Who knows when the last time Hazrat Abbas alayhi salam, Hazrat Ali Akbar alayhi salam, Imam Hussein alayhi salam had even tasted water. Who knows when that was? And so, but he still got the energy to do azan on the morning of Fajr time. Imam Hussein still had the energy to go and tell the people in Karbala, tell the people that were trying to kill him of his lineage. And when that didn't work, he sent his son, who looked like Prophet Muhammad. And as the son was riding from the camp, Imam Hussein, whose back was already broken, keeping up with the horse, running as fast as he can. His face is right next to Hazrat Ali Akbar alayhi salam. He didn't want to leave him. And Hazrat Ali Akbar alayhi salam rode off. He rode off and he kept fighting. And what a war did he fight? As I said, I know Muhammad would get up and look and see if their uncle Abbas was watching. Hazrat Ali Akbar alayhi salam, he didn't need to do this. He was an older man. He was a youth. He was a youthful man that was grown tall like Prophet Muhammad. And he was fighting this war, and nobody could come near him. This was a man trained by the lion of the Quraysh. This is a man whose swordsmanship was unmatched by most people on earth, and nobody could come near him. And he knew that the boss was watching, and Imam Hussein was watching, and he was not fearful, nor was he sad. He was ready to die, and the kind of war he fought was immaculate. But the one thing bothered him. Hazrat Ali Akbar alayhi salam was like his father Hussein. Bibi Fatima, when the day that she was passing away, she woke up that morning feeling energetic, feeling better than she had felt in so many days. She cleaned the whole house herself on the last day on earth. And she filled all of the jugs in the house with water. And they asked her why. And she said, my Hussein is always thirsty, and people are going to be too busy taking my mayats to give him water. Imam Hussein, since he was a kid, always felt thirst like most people didn't. He felt thirst more intensely. And so did Hazrat Ali Akbar alayhi salam. He hadn't drank water in God knows how many days. And it was so hot. And, if you've ever been in a fight, if you've ever had to defend yourself, played sports, it's nothing like it, right? Defending yourself, fighting is a different kind of energy, mental, physical, psychological energy, takes everything out of you. That's why you see a boxer gets hit once and he's knocked out, right? Hazrat Ali Akbar alayhi salam, fighting, with all he had. His throat was so dry. He stepped off of the battlefield and he went to his father again. And his father, for a second, rejoiced. Oh, my son, you're back. He said, Father, I'm fighting such a great war. But if I had just one sip of water, Father, one sip of water, right? Hazrat Ali Akbar alayhi salam, he would have said this to anybody else. But the vulnerability the son feels to your father, right? When there's no one to help you and you turn to your dad, you say, Father, help me. Father, help me. This is what the vulnerability that Hazrat Ali Akbar had gone to. He would never ask for water. Bibi Sakina was thirsty. Hazrat Ali Asghar was thirsty, but Hazrat Ali Akbar knew he could ask his father for water, and if there was water, his father would give it to him, and it would be okay. So he asked his father. He said, Father, please give me one drop. And his father showed him. He said, feel my tongue. And he felt his tongue and saw his tongue felt like sandpaper with thorns on it. And he said, Dad, you're even thirstier than I am. My father, you're even thirstier than I am. And he mounted his horse and he rode back. And he kept calling out to his father. He kept praising his father, reminding people who he was, Hazrat Ali Akbar alayhi salam, who his father was, who his grandfather was, who his great-grandfather was. And then Imam Hussein is watching. You can see Hazrat Ali Akbar alayhi salam anymore. You couldn't see him anymore. Hazrat Ali Akbar alayhi salam, most people called out to Imam Hussein, Assalamu alaikum ya Maulana. Hazrat Ali Akbar alayhi salam didn't say anything. He didn't say anything because he knew his father's back was broken. He knew that there was nobody to help him carry his body. So he laid there silently, and Imam Hussein found Hazrat Ali Akbar alayhi salam on the floor. He found him on the floor, and Hazrat Ali Akbar was laying there. If you can't see, he had his hand like this. And Imam Hussein says next to him, I said, son, are you hurt? And Hazrat Ali Akbar alayhi salam said, he's like, no, it's just, we're trying to convince him that he's not as badly hurt as he was. Imam Hussein removes his hand, and he sees the spear going through Hazrat Ali Akbar's body. He tried to remove the spear, but his hand was shaking. So he called to Allah. He asked Allah for strength, and Allah sent him the same strength that he sent Hazrat Ali alayhi salam at the Battle of Khaybar when he lifted the door and used it as a shield and flung it across. He gave him that same strength, and Imam Hussein needed all of that strength to pull the spear out of Hazrat Ali Akbar alayhi salam.
pull the spear out of Hazrat Ali Akbar alayhi salam. The blood, if you ever seen, somebody get a mortal wound like that, I think about Hazrat Abbas riding with his arms amputated and blood squirting out the side. How much blood must have squirted on the face of Imam Hussein? This blood would soon be met with the blood of Hazrat Ali Asghar alayhi salam. This blood is squirting on Imam Hussein's face. It squirted in his eyes, and for a second it blinded him. It blinded him for a second, and he wiped the blood from his hands, and he turned to Allah, and he says, Ya Allah, you asked Hazrat Ibrahim to sacrifice his son. Today I sacrifice my son to you. You replaced it with the ram. My son has been sacrificed for you and you accepted it. But Allah, I'm not wearing a blindfold and neither is my son. For Muhammad wa ala Muhammad salam. Muhammad wa ala Muhammad wa jal farajum. Mu'min mu'minat, please your Lord. Please your Lord. Sacrifice for your Lord. Sacrifice for your Lord. Yes, he can't send us to hell. But Allah is the only thing worthy of sacrificing for. And Allah is worthy to sacrifice for. Bar Muhammad wa ala Muhammad sallallahu Next we have our main speaker, Urdu speaker, Maulana Sayyid Abid Bilgrami Shab from Hyderabad, India. After Allah's salawat, let's please recite the Surah Fatiha for the marhum of the family of Maulana Sayyid Abid Bilgrami Shab and for good mu'min and mu'minat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला मज़लूम करबला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम हल मिन नासिरिन यंसुरना। सल्लत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ादारान इमाम अल-असर इमाम बारगाह लॉस एंजलिस की ये 8वीं मजलिस है। 8 दिन गुजरने के बाद शब-ए 9 मुहर्रम की मजलिस है। शब-ए 9 मुहर्रम 1443 हिजरा 2021 की। कितनी जल्दी ये अय्याम गुज़र गए, 8 दिन भी गुज़र गए। नुसरत इमाम पर मुसलसल आपकी खिदमत में मारूज़े कि इमाम की नुसरत ये सबसे बड़ी इबादत है। ये वो नुसरत है कि अगर इमाम की कोई नुसरत करे, इसलिए कि मौला हुसैन ने हमसे मांगा है, हेल्प मांगी है। मैं बार बार ये जुमला बोल रहा कि हम सब के लिए इट्स ए बिग ऑनर। कहीं का शिया हो, उस हम के लिए इतना बड़ा ऑनर है कि इमाम हमसे मदद मांग रहे हैं। हमको इस काबिल समझे, हमको ये इज़्ज़त दी मौला हुसैन ने कि वो पूछ रहे क्या तुम मदद कर सकते। अब हर इंसान के ऊपर है कि वो खुद डिसाइड करे कि वो मदद कर सकता है या मदद नहीं कर सकता। अगर मदद नहीं कर सकता तो हमारी लाइफ का डिज़ास्टर है, कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं है, डिज़ास्टर है लाइफ का। हर इंसान को चाहिए कि वो आगे बढ़े और इमाम की मदद करे। इसलिए कि दोस्तों हमारी ज़िंदगी में क्या है, अगर एक चीज़ आ गई, ये एक चीज़ आ गई कि मैंने इमाम की मदद की है, तो हियर एंड हियर आफ्टर सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। मैं बार बार 8 दिन से बोलता हुआ आ रहा कि ये इतनी ज़रूरी, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा अपनी लाइफ के स्टाइल को बदलना, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को बदलना, बदल कर टूवर्ड्स मौला हुसैन, टूवर्ड्स करबला लेके जाना, और ये सोचना कि ये लाइफ तो एक टेम्प्रेरी लाइफ है। परमानेंट लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इमाम की नुसरत करे। अगर नुसरत इमाम है तो सब कुछ है, मौला की मदद नहीं है तो हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। और आप देखो जितने लोगों ने इमाम की मदद की, नुसरत इमाम की, आज वो लोग सब सर्वाइव कर रहे हैं, आज वो लोग सब ज़िंदा है। मैं आपके सामने 1000 वाक़यात सुना सकता। अल्लाह
एग्ज़ाम्पल दे रहा मैं, अल्लाह हम सब को कूफे की ज़ियारत नसीब करे, मौला के घर की। अगर आप मौला के घर जाएंगे इंशाअल्लाह, कूफे में जगह वही है, बिल्डिंग वो नहीं है, बट जगह वही है। जब हम मौला के घर जाते हैं, वहाँ पे कितना एक जाबिर हाकिम इब्न ज़ियाद ज़ालिम था कि जिसने वो जुल्म किया था कि उसने 3.5 या 4 हज़ार शियान हैदर करार को जेल में डाला था। और उसकी जेल ऐसी थी, इंग्लिश का वर्ड है ऐसा, वो यहाँ पे थी। 4 हज़ार शियान हैदर करार जेल में थे। क्यों थे जेल में? उनका जुर्म क्या था? क्या उनका क्राइम था? कोई जुर्म करे थे? नहीं, उनका जुर्म ये था कि उनके दिल में विलायत अमीर अल-मोमिनीन थी, मौला अली की विलायत। ये उनका सेक्रीफाइस है। मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर सेक्रीफाइस इंसान दे तो वो हमेशा ज़िंदा रहता, हमेशा ज़िंदा रहता। जनाबे 4,000 लोगों में जनाब फ़िज़ा, उनके 4 बेटे थे। इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर था, मालिक अश्तर के बेटे इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर, फ़िज़ा के 4 बेटे, और मुख्तार इब्न अबू उबैदा सखफ़ी जनाब मुख्तार अंदर थे। पूरे शियान हैदर करार, यंग लड़के भी थे, बूढ़े लोग भी थे। जब वो लोग नीचे गए, वहाँ पे रहे, कितने साल रहे? साल, 1.5 साल, 2 साल। ऐसी जेल में रखा था उसने, ऐसी जेल में 20 मीटर्स ज़मीन के नीचे। ये ऐसी जेल थी कि वहाँ पता नहीं था कि ये दिन है या रात है, दिन है या रात है। वहाँ पे ये भी नहीं मालूम था कि यहाँ पे ये लोग जो यहाँ पर है वो लोग कैसा है। एक रोटी या 1 गिलास पानी मिलता था बस, और कुछ नहीं। जेल के अंदर रख दिया, कुछ नहीं मालूम कि ऊपर क्या हो रहा। एक दफ़ा अगर कोई जाता है तो फिर वो वापस भी नहीं आता है। अगर कोई मर जाता है, कोई इलाज नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। अगर कोई मर भी जाता है तो उसकी बॉडी वहीं रहती कि और बीमारी फैले और भी लोग मरे। ऐसे जुल्म के साथ ये जालिम इब्न ज़ियाद के, जिसकी नस्ल के ऊपर ज़ियारत आशुरा में क़यामत तक लानत है, लाने आले ज़ियादन, आले ज़ियादन। ऐसी जेल में मौला के चाहने वाले थे। और इब्न ज़ियाद आयरन रॉड की तरह हुकूमत कर रहा था। उसने सबसे आखिर में जनाब मीसम तमार को पकड़ा, और मीसम को पकड़ के उनके साथ वो जुल्म किया। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा कि अगर तुम नुसरत इमाम करोगे तो तुम्हारा नाम बाकी रहेगा, तुम्हारा नाम बाकी रहेगा लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया में। और अगर तुम इमाम की मदद करोगे तो हमेशा तुम ज़िंदा रहोगे। ज़ाहिरी तौर पे तकलीफ़ होगी, बट यू विल सर्वाइव हियर एंड हियर आफ्टर। अब इसका वो देखें आप, जब मीसम को उसने पकड़ा और मीसम को पकड़ के अपने पास लेकर आया, जेल में दरबार में बुलाया। मीसम की एज है +60+ है, मौला के साथी है, मौला के साथी है, 70+ बूढ़ा इंसान है। उसको रस्सियों में जकड़ कर लाकर इब्न ज़ियाद के सामने खड़ा किया गया। जालिम इब्न ज़ियाद तख्त पे बैठा हुआ है, 2000 के करीब दरबार में लोग बैठे हुए। इब्न ज़ियाद ने मीसम से कहा, मीसम यहाँ पर मेरी हुकूमत है, तुम अली अली नहीं करना। मीसम ने उसको ऐसे गौर से देखा, देख के कहा, सुनो, मैं पैदा हुआ हूँ अली अली करने के, ये जज्बे को पैदा करो, ये फीलिंग्स। ही वॉज सो स्ट्रांग, सो स्ट्रांग। कहा, तू क्या बोलता है? मैं तो सिर्फ ज़िक्र अली करूँगा। इस तरह इन लोगों ने कुर्बानियों को देखकर, सेक्रीफाइस को देखकर मौला के ज़िक्र को बचाया। आज हम 1% भी हमारा सेक्रीफाइस नहीं, 1% भी हम सेक्रीफाइस नहीं करते। पकड़ के लाया। उसके बाद इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि क़ैद से एक कैदी को लेकर आओ। दरबार में एक कैदी पेश किया गया जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जंजीरों में जकड़ा हुआ था। दरबार में जंजीरों की झनकार, आहिस्ता 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 वो कैदी आया और मीसम तमाम, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। मीसम ऐसा है, उसके बाजू आके उसको कैदी को खड़ा किया। मीसम ने ऐसा देखा, देख के पहचान गए, कहा, अली वाले एक दूसरे को तो बहुत अच्छा पहचानते हैं ना। मीसम ने ऐसा देख के कहा कि मुख्तार, वो मुख्तार था, मुख्तार मुबारक हो, तुम खातिलान हुसैन से बदला लोगे। अभी वाक़ई करबला नहीं हुआ,
ये 60 हिजरी का वाक़या, 60 हिजरी का वाक़या, अभी करबला का वाक़या नहीं हुआ। मीसम ने कहा मुख्तार मुबारक हो, तुम खातिलान हुसैन से बदला लोगे। इब्ने ज़ियाद का रंग बदल गया, इब्ने ज़ियाद का चेहरे का रंग बदल गया। उसने कहा ये कैदी मेरा कातिल है। उसने जल्लाद को हुक्म दिया कि फ़ौरन इसको कत्ल कर दे। जल्लाद खंजर लेकर आगे बढ़ा। आप मेरी तरफ देखो कि देखो अगर इमाम के लिए काम करोगे तो इमाम तुम्हारी मदद कैसे करता है, हाउ इमाम तुम्हारी हेल्प करता है, हेल्प कैसे करता है। देखो दरबार में खातिल आगे बढ़ा, आगे बढ़ के मुख्तार के गले पे खंजर रख दिया। मुख्तार के गले पे खंजर रखा। मुख्तार ने पलट कर मीसम को ऐसे देखा कि व्हाट यू वांट टू से, अब तो मेरा ख़त्म हो रहा। तो मीसम ने उसी टोन में कहा, उसी टोन में कहा कि मुख्तार तुम खातिलान हुसैन से बदला लोगे, यू विल टेक रिवेंज। अब क्या था, अब इब्ने ज़ियाद जालिम हुक्म देता है कि राइट नाउ, अभी इसके सर को ख़त्म करो। मुख्तार के जल्लाद खंजर लेकर यहाँ रख दिया गले पर। अब फ्यू सेकंड्स बाकी है, खाली फ्यू सेकंड्स। खंजर चले ये मर जाए, खंजर चले ये मर जाए। ऐसे मौके पर मुख्तार ने पलट के देखा मीसम को कि अब क्या बोलते तुम। ये वो वक्त था कि अच्छे अच्छे लोगों के ईमान डगमगा जाए। पता नहीं मौला ने क्या कहा, मैंने क्या सुना, लेकिन ये मीसम था, इमाम अली की मोहब्बत में वो यकीन था। जब खंजर रख दिया अब चलना है, मुख्तार ने मीसम को देख के कहा नाउ यू से व्हाट यू वांट टू से। मीसम ने का यकीन मेराज पे चला गया। बड़ी आवाज से, बड़ी टोन में कहा कि मुख्तार उसने मुझसे कहा जो लौहे महफूज की तहरीर को बदल सकता है। बस ये कहना था। दरबार मीसम के अल्फाज ख़त्म हुए। दरबार के दरवाजे पे यजीद का पोस्टमैन खड़ा हुआ था। यजीद का जो पोस्टमैन होता था उस जालिम का, उसका ड्रेस अलग होता था। और उसने वहाँ से पुकार के बोला कि इब्ने ज़ियाद कत्ल का हुक्म देने से पहले ये ख़त पढ़ ले। और जितने ये गवर्नर्स थे यजीद के पोस्टमैन से बड़ा डरते थे कि पता नहीं क्या होगा, इसलिए कि चोर थे, कहीं सस्पेंड तो नहीं हो गया, कहीं ये तो नहीं हो गया। वो खंजर ऐसी है। यजीद का पोस्टमैन इब्ने ज़ियाद के पास गया। इब्ने ज़ियाद ने जो भी सिस्टम था खोला, ख़त को निकाला, ख़त पढ़ना शुरू किया। जैसे ही ख़त पढ़ना शुरू किया, नीचे से मीसम तम्मार ने कहा इब्ने ज़ियाद यू वांट मी टू टेल यू व्हाट, तुमको मैं तुमको बोलूँ, यू वांट मी टू टेल यू क्या लिखा हुआ है। हाँ, इब्ने ज़ियाद के चेहरे का रंग बदल गया। मीसम ने कहा कि इब्ने ज़ियाद मैं तुझे बोलूं क्या लिखा हुआ है, यू वांट मी टू टेल यू। मीसम नीचे है, इब्ने ज़ियाद ऊपर है। बस खत खुला, यजीद ने लिखा था कि इब्ने ज़ियाद मेरे एक वज़ीर ने मुझसे सिफारिश की है और मुख्तार जिस हालत में है छोड़ दे। अब क्या था, अब आपने देखा कि कैसे यकीन के साथ अगर तुम काम करोगे। अब सुनो आगे, अगर ये पोस्टमैन 5 मिनट बाद में आता, 5 मिनट बाद में आता, ट्रैफिक में फंस जाता, कुछ भी होता, तो मीसम का गला तो कट जाता, मुख्तार का गला तो कट जाता, मीसम झूठे साबित होते। और 5 मिनट पहले आता, अगर 5 मिनट पहले आता ये पोस्टमैन, दुनिया को मीसम का यकीन का पता नहीं चलता, दुनिया को मीसम के यकीन का पता नहीं चलता कि क्या यकीन था मौला की ज़ात पे। अब ये वही कर सकता जो वक्त का मालिक हो। अली ने बताया कि मैं वक्त का मालिक हूँ। बस उसके बाद तो मुख्तार तो छोड़ दिया गया। मीसम को उसने कितने जुल्म से कत्ल किया, सब वाक़या मालूम है आपको। मैं वाक़या नहीं पढ़, मीसम के हाथ काटे गए, मीसम को हैंग किया गया, मीसम के पैर काटे गए, मीसम की ज़बान काटी गई। मैं कितनी आसानी से बोल रहा हूँ, मैं कितनी आसानी से बोल रहा हूँ, आप आसानी से सुन रहे। कभी सोचा कि इमाम अली की मोहब्बत में इन लोगों ने कितना सेक्रीफाइस किया, कितनी कुर्बानी दी। अब सुनो, उस वक्त इब्ने ज़ियाद आयरन रॉड की तरह हुकूमत कर रहा था, उसकी बड़ी हुकूमत थी
अब मीसम को शहीद करके उनकी डेड बॉडी को फेंक दिया गया, दफन कर दिया गया। उस वक्त कोई मीसम का नाम नहीं था, लेकिन आज 1400 साल के बाद इब्ने ज़ियाद जिस महल में रहता था वो खंडर है, और आज मीसम का रोज़ा बना हुआ है, मीसम का मज़ार बना हुआ है। यह है इफ़ यू वर्क, मैं बार बार जो बोलता, हियर एंड हियर आफ्टर, हियर एंड हियर आफ्टर। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, हियर एंड हियर आफ्टर। इफ यू वर्क फॉर इमाम, इफ यू वर्क फॉर इमाम इन कैलिफोर्निया, ये रिवॉर्ड मिलता है। मरने के बाद ये रिवॉर्ड है कि आज मीसम का मज़ार है, आप सब जानते हैं। अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। लेकिन इब्ने ज़ियाद खंडरात में चले गया, उसकी पूरी नस्ल के ऊपर क़यामत तक लानत आ गई। ये अगर तुम कोई काम करोगे, ये मुहर्रम बेहतरीन महीना है अपनी ज़िंदगी को बदलने का। बस इतना करो, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करो, थोड़ा सा टूवर्ड्स इमाम हुसैन। मैं फर्स्ट डे से बोल रहा, सबसे पहले वाजिबात पे अमल करो, वो सब कर रहे माशाल्लाह। रिस्क हराम से अपने आप को बचा लो। ये गिफ्ट दो मौला हुसैन को कि मौला आज के बाद से हम रिस्क हराम नहीं खाएंगे। बेहतरीन तोहफा इमाम हुसैन को, रिस्क हराम नहीं खाना। यूथ को बोल रहा, उसी रेस्टोरेंट्स में खाना खाओ कि जहाँ पे हलाल है, वही चीज़ खाओ जो हलाल है। मैं हलाल के उसमें मैंने बहुत बड़ा मैसेज दे दिया। वो जगह इसलिए कि तुम भी खाओगे, तुम्हारे बच्चे भी खाएंगे। अगर बच्चे खाए तो तुम्हारी नस्ल का प्रॉब्लम होगा, तुम्हारे जनरेशन का प्रॉब्लम होगा। उसके बाद रिस्क हलाल खाओ और अपनी लाइफ को बदलो, अपनी ज़िंदगी को बदलो। खाली दुआ ये करो कि परवरदिगार गिव मी चांस टू सर्व इस्लाम, गिव मी चांस टू सर्व इमाम। और जब तुम दुआ करते उसके बाद अपने अखलाक को बदलना कि तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, ज़बान को अच्छा रखना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मेरे अखलाक बदल गए तो मेरी ज़िंदगी बदल गई। मौला हुसैन और पूरे मासूमीन, उन्होंने इस्लाम को अखलाक के ज़रिए फैलाया और किसी के ज़रिए नहीं फैलाया। अल्लाह के रसूल के अखलाक, इमाम अली के अखलाक, क्या क्या कैरेक्टर है, क्या उनका बिहेवियर है। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, मोहम्मद और आले मोहम्मद के अखलाक से फैला। अब आप इंसाफ से बोलो कि हमारे कैसे अखलाक हैं। मैं अपने, देखिए, लोगों के सामने, बड़े स्टेटस वालों के सामने, पैसे वालों के सामने मेरे अखलाक बहुत अच्छे। बाज़ वक्त ये होता है कि बाहर अखलाक बहुत अच्छे होते हैं, घर के अंदर अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरे पास एक एटीट्यूड है, एक अखलाक। तो ये चीज़ को चेक करो कि अखलाक अच्छे होना चाहिए, कि हाउ यू स्पीक विद अदर। इतने सॉफ्ट स्पोकन बनो, इतने सॉफ्ट स्पोकन कि जितने तुम सॉफ्ट स्पोकन रहोगे उतना तुम प्रोपोगेट कर सकते हो। ऑफिस में, जॉब पे, कॉलेजेस में, यूनीज में, सबसे ज़्यादा इंसान सॉफ्ट स्पोकन रहना। बाहर वाले से जिससे मिल रहे तुम, बाहर और अंदर, ये नहीं कि आप अंदर बहुत अच्छे लेकिन बाहर जब जाएंगे तो बहुत खराब, या बाहर बहुत अच्छे घर के अंदर खराब। नहीं, अब अखलाक रसूल खाली बता देता। मशहूर वाक़या है मदीना मुनव्वरा का, वेरी फेमस वाक़या। मदीना मुनव्वरा में, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे, जब पूरा मदीना मुसलमान है, पूरा मदीना, लेकिन कुछ गैर मुस्लिम्स भी रहते हैं वहाँ पे, जिसमें एक यहूदी फैमिली रहती थी, यहूदी फैमिली, खैबर वाली, वो फैमिली भी रहती थी। वहाँ पे एक विडो थी, यहूदी विडो थी, जो अपने घर में रहती थी। उस औरत को अल्लाह के रसूल से बड़ी दुश्मनी थी। शहर अल्लाह के रसूल का, सरकार का शहर है। उस शहर में किरदार ये कि दुश्मनी बहुत है रसूल से। उसने क्या किया, वो क्या करती थी, एवरी डे, जब मशहूर वाक़या है लेकिन इसमें कंप्लीट मैसेज है। अल्लाह का रसूल जब तबलीग करते, जब जाते थे सामने से, तो वो कचरा फेंकती थी, गार्बेज। किस पे फेंकती थी, अल्लाह के रसूल के ऊपर, रोज गार्बेज फेंक रही। अल्लाह के रसूल, लोगों ने कहा ये बदतमीज़ है, हम जाके इससे पूछें। सरकार ने कहा कुछ नहीं। अब आप इंसाफ से बोलो, लॉस एंजलिस में आप घर के सामने से जा रहे,
कोई आप पे गार्बेज फेंक दे, आप तो सू कर देंगे उसको, आप लोग सू कर देंगे। और अल्लाह का रसूल कौन है? कायनात का मालिक है, ज़मीन और आसमान का मालिक है, जिसकी मोहब्बत में अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, सारे ओशंस में शिप्स चलाई जिसकी मोहब्बत में, कश्तियाँ चलाई, आसमान से पानी बरसाया, चाँद और सूरज में रोशनी दी सिर्फ इनकी मोहब्बत में। हदीस किताब के सामने जो अव्वल अक़ल है, अव्वल नूर है, अव्वल अदद है, वो रसूल, वो सामने से जा रहा, एवरी डे जब सरकार सामने से गुजरते कचरा डाल देती, लेकिन अल्लाह का रसूल पलट के भी नहीं देखता उसको। लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर आप बोले तो हम इसको मारें जाके। आपने कहा शायद इसको मेरी मारिफत नहीं है। क्या बात है, क्या किरदार। आई थिंक इसका मतलब है कि आई थिंक शी डजंट नो मी प्रॉपरली, शी डजंट नो मी प्रॉपरली। आप इंसाफ से बोलो, मेरे ऊपर अदालत में काबिल बैठूंगा? कभी नहीं बैठूंगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एवरी डे। आप बोलेंगे तो जानबूझ क्या कर रही, और जानबूझ क्या करती थी वो। अब इतना प्रॉब्लम, तो लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, अच्छा आप नहीं कुछ बोलते, आप रास्ता बदल दो, दूसरे रास्ते से जाओ। आपने कहा मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगा, मैं उसका रास्ता बदल दूंगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मैं उसका रास्ता बदल दूंगा। जब दिन गुजरने लगे, एक दिन सरकार जा रहे, कचरा नहीं आया, गार्बेज नहीं आया। अल्लाह के रसूल ने कोई ठीक है नहीं आया, बिजी होगी, नेक्स्ट डे गए, वही रास्ते जाते थे हमेशा, फिर कचरा नहीं आया। 3 दिन 4 दिन के बाद हम होते थे क्या करते, हम बोलते यार शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र है कि आज नहीं आया। लेकिन अल्लाह के रसूल ने क्या किया, मालूम करवाया वहाँ पे कि इसको क्या हुआ, वो ये कहाँ है, या यहाँ नहीं रहते, कहीं गई हुई है। तो लोगों ने कहा नहीं यार रसूल वो बीमार है, बिस्तर पे, वो यहीं पर है लेकिन बीमार है। अल्लाह का रसूल सीधा उसके घर चले गया, अंदर दरवाजे को नॉक किया। उसकी कनीज, उसकी सर्वेंट बाहर आई, उसने पूछा कौन है। सरकार ने कहा कि उसको जाके बोलो वो कैसी है, उसको जाके बोलो इस्लाम का रसूल आया है। ओ सर्वेंट गई, जाके बोली अब गज़ब हो गया, तेरी मौत है। उसने पूछा क्यों, तो कहा इस्लाम का रसूल आया है तेरे घर पे और और तुझे पूछ रहे, वो बदला लेने आया। ये घबरा गए, घबरा के इसने कहा अच्छा ठीक है अंदर आओ, अंदर आओ बोलो। सरकार अंदर गए, जैसे ही अल्लाह का रसूल अंदर गए, सलाम किया। उसने कहा कि आपने बहुत अच्छा वक्त ढूंढा मुझसे बदला लेने का, जब मैं बीमार हूँ आप आके मुझसे बदला ले रहे। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं मैं बदला लेने नहीं आया। उसने कहा क्या, कहा मैं बदला लेने नहीं आया। उसको यकीन नहीं आया कानों को, शी कुडंट बिलीव। उसने कहा आपने क्या कहा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं बदला लेने नहीं आया, आई जस्ट केम टू आस्क हाउ आर यू। मैंने सुना कि तेरी तबीयत सही नहीं है, मैंने पूछा वे वर यू, तो उस लोगों ने कहा कि तेरी तबीयत सही नहीं है, तो आई जस्ट केम टू आस्क यू हाउ आर यू फीलिंग। आप बिलीव करो, जो दुश्मन रसूल थी एक लम्हे में शी वाज शॉक, शर्मिंदा हो गई। शर्मिंदा होकर कहने लगी आप मेरी तबीयत पूछने आए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ मैं अब तेरी तबीयत पूछ रहा हूँ। उसने कहा अच्छा ये बताओ कि ये जो आप आए हैं पूछने, ये आप जो रिलीजन लेकर आए, जो इस्लाम लेकर आए, ये उसका मैसेज है या ये आपका है। आपने कहा नहीं, जो मैं इस्लाम जो दीन लेकर आया हूँ, जिसको मैं प्रीच करता हूँ, जिसका मैं रसूल हूँ, उस दीन का, उसका बेसिक मैसेज ये है कि अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है तो उससे पूछो। उसने कहा अगर इस्लाम इतना अच्छा मज़हब है तो आप मुझे कलमा पढ़ाइए। उसने उसी वक्त कलमा पढ़ा, सबक पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह।
आपने गौर किया? सिर्फ किरदार, सिर्फ किरदार, अखलाक। अगर अखलाक अच्छे होंगे तो आप पूरी कैलिफोर्निया में आपका नाम होगा। आप सोचो, एक यहूदी औरत को इतना जुल्म करने के बाद उसको इस्लाम बताना, ये सिर्फ किरदार मोहम्मद और आले मोहम्मद, सिर्फ कैरेक्टर है। कि अगर कोई बीमार है तो उसकी तबीयत को जाओ, उसको पूछो, ख़ानदान में, रिश्तेदार में, कैलिफोर्निया में। ओके, कैलिफोर्निया में डिस्टेंसेस बहुत हैं, 2-2 घंटे की ड्राइव है, आपकी जॉब्स है, आप जा नहीं सकते, बट एटलीस्ट फ़ोन तो कर सकते कि हाउ आर यू। ये इतना ज़रूरी है, ये इतना ज़रूरी है कि अगर आप फ़ोन करके उनसे बात करें, रिश्तेदारों से, और उनको ये बोलें कि भाई तुम कैसे हो, ये सिले रहम भी बनेगा, तुम खत रहम से भी बचोगे और ये सिले रहम भी बनेगा। ये इतने ज़रूरी है। ये कोशिश करो कि हमेशा अखलाक के ज़रिए से इस्लाम, और वही आदमी, प्लीज़ गौर से सुनो, वही आदमी लश्कर इमाम में शामिल होगा जिसके अखलाक अच्छे हों। वेरी वेरी क्लियर मैसेज। लश्कर इमाम में वही ज्वाइन करेगा जिसके अखलाक अच्छे। अगर तुम्हारे अखलाक अच्छे नहीं है तो तुम कभी ज्वाइन ही नहीं कर सकते, इसलिए कि जब अखलाक ख़राब होते तो फिर इंसान खत रहम करता, सिले रहम नहीं करता। मैं बोल रहा हूँ, अगर अखलाक ख़राब होंगे, मेरा मतलब ये नहीं कि किसी का भी अखलाक अच्छे नहीं है, आई डोंट मीन। प्रॉब्लम क्या है? सास बहू का इश्यू है, बहू सास का इश्यू है, और ये वेरी कॉमन इश्यू, ये कभी नहीं होनी चाहिए। हमेशा डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये इतना लविंग रिलेशनशिप है, इतनी लविंग रिलेशनशिप है। हमारे पास एग्जाम्पल है, मेरी मजलूम बीवी जहरा सलामुल्लाह अलैहा, जिसका पूरा घर उजड़ गया आशूरे में। वो बीवी 4 साल 4 इयर्स अपने मदर इन लॉ के साथ, बीबी फातिमा बिनते असद के साथ मदीने मुनव्वरा में गुजारी। अल्लाह मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। 4 इयर्स गुजारी। कहीं भी कोई हिस्ट्री लिखने वाले ने, किसी नरेटर ने ये नहीं लिखा कि दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हुआ। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कोई बुरी बात नहीं है, सगे भाइयों में हो सकता, कोई मुश्किल नहीं, अच्छा, लेकिन कहीं भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी नहीं हुआ। इतना लविंग, मोहब्बत, प्यार के साथ इन लोगों ने वक्त गुजारा। ये हमारे लिए एग्जाम्पल है। कोई बताए तारीख से कि यहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, नहीं हुआ। तो ये कोशिश करो, ये ट्राई करो कि जितना हो सके ये अपने रिलेशनशिप को ऐसा स्ट्रांग करो। ऐसा अगर तुमने कर लिया तो इससे बड़ी कामयाबी नहीं है। ये रिश्ते को मजबूत करो। आज हमारी कम्युनिटी में प्रॉब्लम है, कैलिफोर्निया में नहीं है, मैं एक जनरल मैसेज दे रहा, अगर तुम्हारे अखलाक घर में नहीं है, मदर इन लॉ को भी चाहिए और डॉटर इन लॉ को भी चाहिए। डॉटर इन लॉ को ये चाहिए कि वो अपनी मदर इन लॉ को अपनी रियल ओन मदर समझना। जैसा कभी तुम्हारी माँ, मैं डॉटर इन लॉस को बोल रहा हूँ, कभी तुम्हारी माँ, उसकी आवाज़ रेज हो गई, तुमको डांट दिया तो तुम बुरा मानते हो? माँ अगर बोले खामोश बैठ जाते, बोलते मेरी माँ है, वो डांटेगी भी लेकिन उसके बावजूद तुम बुरा नहीं मानते। लेकिन अगर कभी मदर इन लॉ की आवाज़ रेज हो जाए, तुम घर छोड़ के चले जाओगे, तुम बोलेंगे आई डोंट वांट टू लीव। आप सोचो कितना डिफरेंस है। अगर तुम्हारी माँ बोलेगी, तुम कभी बुरा नहीं मानोगे, तुम बोलोगे ठीक है मेरी माँ है ना। सेम चीज़ तुम अपने मदर इन लॉ को समझो तो तुम्हारे घर का इश्यू खत्म हो गया, घर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जितनी मोहब्बत के साथ तुम अपने बच्चों को रेस करोगे, तुम्हारे बच्चे अगर तुम्हारी सास के साथ रहे, ससुर के साथ रहे, तो वो सबसे अच्छा है कि बच्चों को बुजुर्ग का साया रहता साथ। और तुम अगर अपने हस्बैंड को लेके उसकी माँ के पास से अलग हो गए तो ये तुम्हारी स्मार्टनेस नहीं है, ये स्मार्टनेस नहीं है, बल्कि ये जो है
तुम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे। क्यों? अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारी माँ के साथ रहा, तुम्हारे बाप के साथ रहा, तो रहमत का शेड रहता था, फिर तुमको पूरी जिंदगी स्ट्रगल करना नहीं पड़ता। अल्लाह की रहमत का शेड उसकी माँ है, तुम्हारी माँ है, उसकी माँ है। माँ जब तक साथ है, अल्लाह जिनके माँ बाप मर गए उनकी खबरों में रहमतों को नाज़िल फरमा, और जिनकी माँ बाप जिंदा है, अल्लाह इमाम ज़माना की सलामती के सदक़े से उनको सलामत रख, हर बीमार को सलामत रख। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आप समझ रहे मेरी बात? अगर तुम्हारी माँ जिंदा है तो तुम्हारे ऊपर रहमत है, ब्लेसिंग है, ऐसा ब्लेसिंग है। तो मेरी ख्वाहिश है, जो भी सुन रहा मुझे अल-असर इमाम बारगाह से, लॉस एंजलिस से, कि ये चीज़ को ऐसा नहीं कि मुहर्रम है, तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी मदर इन लॉ के साथ नहीं है, तुम्हारा वो भाई के साथ नहीं है, तुम्हारी उस बहन के साथ नहीं है, ये मुहर्रम है। तुम आज़ादारी तुम भी कर रहे हो, वो भी आज़ादारी कर रहे हैं। फर्स्ट रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप, दोनों का रिश्ता है, और तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, फिर तुम मजलिसें भी कर रहे हैं। और फायदा क्या है? अगर तुम ये साल बेहतरीन गिफ्ट दो अपने मौला हुसैन को, अगर किसी से तुम्हारे ताल्लुकात नहीं है, फैमिली मेम्बर्स में बोल रहा हूँ, फैमिली मेम्बर्स, मदर इन लॉ है, या डॉटर इन लॉ है, या सिस्टर इन लॉ है, या ब्रदर इन लॉ है, या कजन्स है, कोई भी हो, अगर किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम ये मुहर्रम है 10 बिफोर आशूरा, आज आपके पास 8 मुहर्रम की रात है, एक दिन और है, कल की रात क़यामत की रात है, शब आशूर है कल, अभी भी मौका है। कॉल नाउ और टुमारो, कॉल, डोंट सेंड द व्हाट्सएप या फेसबुक, या व्हाट्सएप नहीं करना, या फेसबुक पे मैसेज नहीं करना, कॉल करो, कॉल करके बोलो कि आई एम सॉरी, मुहर्रम है, फॉरगिव मी इफ आई सेड एनीथिंग, इफ आई हर्ट यू। तुम्हारी मदर इन लॉ है तो तुम कॉल करो, एंड आई एम टेलिंग मदर इन लॉज ऑल्सो, तुम अपनी डॉटर इन लॉ को कॉल करो। इज्जत नहीं जाती, अल्लाह इज्जत देने वाला है। मुहर्रम में एटलीस्ट यू कैन से टू इमाम हुसैन कि मौला 1443 हिजरा में के मुहर्रम में, ये साल मुहर्रम में मैंने ये चीज़ छोड़ दी आपके लिए, फॉर यू, मौला मैंने छोड़ दी। आप समझ रहे मेरी बात? इतना बड़ा फायदा होगा दोस्तों, एक साल तक तुम एक साल तक, नेक्स्ट मुहर्रम तक एक अल्लाह की रहमत आ जाएगी। तुम मौला हुसैन को गिफ्ट दे रहे हो, तुम मौला हुसैन को तोहफा दे रहे हो। क्या तोहफा दे रहे? कि मौला आपके खातिर मैं मेरी मदर इन लॉ को सॉरी बोल रहा हूँ, मदर इन लॉ बोले मैं डॉटर इन लॉ को सॉरी बोल रहा हूँ, मेरी सिस्टर इन लॉ से मेरी बातचीत नहीं थी, अब बात कर रही हूँ, और आपसे बोल रहा हूँ, उन सारे सिस्टर इन लॉ से, मदर इन लॉ से, सबसे बोल रहा हूँ कि जब भी कोई आए तुम्हारे पास सॉरी बोलने के लिए, ऐसा अकड़ के मत बैठो, इस तरह मत बैठो, नो गो गेट आउट फ्रॉम हियर, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, ये कभी नहीं बोलना। मुहर्रम का मैसेज ये है, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस। इफ यू डोंट फॉरगिव देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अल्लाह एंड इमाम हुसैन? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट? मैं आज इसको माफ नहीं कर रहा, and I'm going to Allah and saying please forgive me, Allah will say get out from here. तू तो मेरे बंदे को माफ नहीं कर रहा। अल्लाह नहीं बोलता, वो करीम है, करीम है, करीम है, करीम है, करीम है। तो ये सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे बड़ी चीज है कि पहली चीज आप क्या करो, आज चेक करो, आज 8 मुहर्रम हो गई। 8 मुहर्रम का सबसे बड़ा मैसेज था मेरा ये, मेरी ख्वाहिश है आपसे, मेरी ख्वाहिश है आपसे, प्लीज आप फौरन आज चेक कर लो, मजलिस में बैठे हुए चेक योरसेल्फ, चेक योरसेल्फ कि
मैंने उसको माफ़ किया, उसको माफ़ किया, उससे मेरी बातचीत नहीं है, उससे मेरी बातचीत नहीं। बाज़ वक्त तो ये भी होता कि एक ही मजलिस में है, मदर इन लॉ भी है, डॉटर इन लॉ भी है, सिस्टर इन लॉ भी है, ब्रदर, सारे लोग हैं, ख़ानदान पूरा है। वो कॉर्नर, वो कॉर्नर, वो कॉर्नर, वो कॉर्नर पे बैठे हुए, एक दूसरे ग्रुप में बैठे हुए, इससे बात नहीं कर रहे। क्यों? आई डोंट वांट टू सी। फायदा क्या ये मजलिस से? फर्श अज़ा है, फर्श अज़ा है। आई बेग यू, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ये अफजल तरीन इबादत है। अगर तुम खते रहम करते रहोगे तो यू एक्सपेक्ट कि तुम इमाम को ज्वाइन करोगे? यू आर एक्सपेक्टिंग कि यू आर गोइंग टू ज्वाइन मौला हुसैन? नेवर। तुम ज्वाइन कर ही नहीं सकते। जो खते रहम करेगा वो इमाम के लश्कर को ज्वाइन नहीं करेगा। आई एम वेरी क्लियर इन माई मैसेज, आई एम वेरी क्लियर इन माई मैसेज कि अगर तुम खते रहम करोगे तुम इमाम को ज्वाइन नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते, ये बदतरीन गुनाहों में से गुनाह है। ऑलवेज इस्लाम मैसेज दे रहा, ऑलवेज इस्लाम पैगाम दे रहा कि सिर्फ सिले रहम करो। मासूमीन का पैगाम यही, अल्लाह का पैगाम यही है। मासूमीन ने पूरी जिंदगी स्ट्रेस किया, फोर्स किया कि सिले रहम करो, सिले रहम करो, सिले रहम करो। सिले रहम करने से तुम्हारे रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं। सिले रहम करने से अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी को, मिसाल के तौर पर 60-70 ईयर्स है, 80-90 कर देगा, 90 ईयर्स तक लग जाएगा। सेहत हो जाती है, बीमारियों से बच जाते हो। और अगर खत रहम करोगे तो अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी की रस्सी को काट देगा। अगर 60 है तो 40 में मर जाओगे। तुम्हारे रिस्क के दरवाजे बंद कर देगा, तुम्हारे रिस्क के दरवाज़ा बंद कर देगा। अगर तुम खत रहम करोगे तो बेहतरीन अमाल, बेहतरीन अमाल, मुहर्रम का बेहतरीन गिफ्ट आपके लिए सिले रहम है। आज 8 मुहर्रम की रात है, ज़्यादा फजाइल नहीं, ये मसाइब की रातें, रोने की रातें, मुसीबत की रातें। एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौला आपको आबाद रखे। जिन जिन लोगों ने आज की मजलिस को स्पॉन्सर किया, अल्लाह उनकी इस सही को कबूल करे और हम सबको सादत दे कि हम इंशाअल्लाह मौला हुसैन के लश्कर को ज्वाइन करें। ये साल का मुहर्रम बीवी हमारी अज़ा को कबूल करे। अल-असर इमाम बारगाह में बैठ के सुनने वालों, अल्लाह तुमको सलामत रखे। जिन्होंने स्पॉन्सर किया मजालिस को, उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, उनके रिस्क में बरकत दे, उनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद करे, सबके मरहूमीन के दर्जात बुलंद। बहुत बड़ी रातें, ये बहुत बड़ी रात है, क़यामत की रातें। 8 मुहर्रम, आज 2 दिन से मौला हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। मैंने बड़ी आसानी से जुमला बोला और आपने सुन लिया। आज शब 9 मुहर्रम है, शब 9 मुहर्रम है आज। 2 दिन से हुसैन के बच्चे प्यासे, एक खेमे से दूसरे खेमे में हाथ में खाली कूज़ा लेके मौला हुसैन के बच्चे जा रहे और कह रहे अल-अतश अल-अतश अल-अतश। मौला हुसैन कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये थी आशूरे के दिन कि जब मैं खेमे के अंदर जाता, छोटे छोटे बच्चे घेर लेते मुझे। बीबी सकीना आके कहती, बाबा प्यास मारे डाल रही, बाबा साखी कौसर का लाल है, हुसैन साखी कौसर का लाल है। क्या बोले, क्या बोले बच्चों को प्यास दिलासा देते, कहते मौला बाबा प्यास मारे डाल रही। दोस्तों, जब भी आज पानी पीना, मजलिस के बाद, मजलिस से पहले जब पानी पीना, ये दिनों में ये बोलना सलवात बर हुसैन लानत बर यजीद, सलवात बर हुसैन लानत बर यजीद। इमाम हुसैन की ख्वाहिश है कि ऐ मेरे शियो, ऐ मेरे शियो, जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद करना। डोंट फॉरगेट कि तुम्हारा हुसैन आज 2 दिन से हुसैन हुसैन के बच्चे प्यासे। पूरी ज़िंदगी यही बोलना, जब पानी पिए, ऑफिस में, घर में, जब आहिस्ता बोलो। सब बच्चों को सिखाओ सलवात बर हुसैन लानत बर यजीद। ये लाजिम है दोस्तों, मौला हुसैन की प्यास को याद करना, ये उनकी विल है। और आज एक ऐसे शहीद का जिक्र है, एक ऐसे शहीद का जिक्र है
ऐसा शहीद कि जो सबसे छोटा था लेकिन सबसे ज़्यादा प्यास की शिद्दत उठाई, सबसे ज़्यादा प्यास की तकलीफ जो उठाई, वो इमाम हुसैन का वो छोटा सा। आज हर घर में झूला है। घर में जब मिंबर बनाओ, घर में जब मिंबर बनाओ तो झूला ज़रूर रखना। जालिम ने एक झूला जलाया, आज करोड़ों मिलियंस की तादाद में शहजादे के झूला। अगर तुम झूले को हाथ में लेके दुआ करो तो अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करता। ये बहुत बड़ा वास्ता है शहजादे अली असगर का, बहुत बड़ा वास्ता, बहुत बड़ा वास्ता। जब भी कोई परेशानी हो, शहजादे का झूला लेके, और शहजादे की नज़र है, दूध का शरबत बनाओ और शहजादे अली असगर की नज़र दो, और 110 मरतबा हुरमुला पे लानत हो, 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 ये तस्वीर पढ़ना। और उसके बाद 5 साल बाद एक अलहम, 3 मरतबा सूरह खुल, 3 मरतबा सूरह कौसर, और फिर 4 साल बाद पढ़ के शहजादी अली असगर और बीबी रबाब के नाम पे नज़र देना। दुआ आपको अंदाज़ा नहीं है, आपकी हर दुआ, हर मन्नत पूरी होंगी। हुरमुला पे 110 मरतबा बैठ के लानत पढ़ो और शहजादी अली असगर का नज़र दूध के ऊपर कर देना। बस दोस्तों, हुसैन का ये वो शहीद है, हुसैन का ये वो बच्चा है जिसकी माँ का दोष खुश हो गया। ज़माने के इमाम से एक चाहने वाले ने पूछा, मुलाकात इमाम का वाक़या है, एक चाहने वाले ने पूछा था कि मौला किसके मसाइब पढ़ना, तो इमाम ने कहा मेरे जद के मसाइब रोज़ पढ़ो, मेरे जद के मसाइब 24 घंटे पढ़ो। उसके बाद कहा करबला के 2 शहीदों का जिक्र ज़रूर करना, एक वो जो मेरी दादी ज़ैनब के पर्दे का वो हाफिज़ था, इन्हें मौला अब्बास। उसके बाद कहा एक उस शहीद का जिक्र ज़रूर करना कि जिसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका था, जिसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, यानी शहजादे अली असगर। अजीज़ व बीबी रबाब वो बीबी का नाम है कि जब मेरा मौला हुसैन ने कहा हल बिन नासिरुन यंसुरना, हर तरफ से लब्बाइक क्या हुसैन की आवाज़ आई, लेकिन क़याम हुसैनी से रोने की आवाज़ आई। मेरा मौला हुसैन खैमे में गया, बीबी ज़ैनब से कहा कि बहन अभी हुसैन ज़िंदा है, रोने का सबब क्या है? तो कहा भैया जैसे ही तुमने हल मिन नासिरुन यंसुरना कहा, अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया कि बाबा मैं भी अभी। इमाम ने कहा लाओ मेरे बच्चे को मेरे हवाले करो, मैं जाके पानी की सबील करता हूँ। जब इमाम बच्चे को लेके जाने लगे तो बीबी रबाब ने रोक के कहा मौला थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चे को मेरे हवाले कीजिए। हुसैन ने रबाब के हवाले किया। रबाब अंदर लेकर गई अली असगर को, नया कुर्ता पहनाया, बालों को संवार दिया, बड़े खूबसूरत बाल थे, झंडूले वाले बाल, नया कुर्ता पहनाया, बालों को संवार दिया, आस्तीन को ऐसे उलट दिया, माँ है ना माँ, और आके कहा मौला मेरा बच्चा पहली मर्तबा मैदान में जा रहा, मौला खूबसूरत था और अच्छा ड्रेसअप करके इमाम के हवाले किया, मुस्कुराते हुए। और इमाम ने कहा रबाब इंतज़ार करो, शायद मैं पानी की सबील कर सकूं। बच्चे को लेके मैदान में गए। बस दोस्तों जब मैदान में गए और जाकर हुसैन ने अबा के दामन को हटाया, दुश्मन ने देखा कि खुराग नातिक है जो हुसैन के हाथ के ऊपर है, बस हाथों को उठा के कहा ये मेरा बच्चा बहुत प्यासा है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका, इसको थोड़ा सा पानी पिला दो। कोई आगे नहीं बढ़ा। तो इमाम ने कहा अगर तुम ये समझते हो, तुम्हारे जहन नाखिस में ये है कि इसके बहाने से पानी मैं पीऊँगा, लो अपने हाथों से पिलाओ। ये कहकर अली असगर को जलती हुई रेत पे लिटाया, जलती हुई रेत पे लिटाया। कुछ लम्हे के बाद हुसैन का दिल फट गया कि हाय मेरे बच्चे को मैं कैसे लिटाऊं। उठा के सीने से लगा लिया। सीने से लगाकर इमाम ने कहा कि अगर अली असगर से कहा कि मेरे लाल तुम भी हुज्जत खुदा के बेटे हो, अपनी हुज्जत को तमाम करो। शहजादे ने सूखी हुई ज़बान अपने खुश होंठों पर फेरने लगे कि मैं जो मेरा बाबा जो कह रहा वो सच है, बाबा जो कह रहा वो सच है, मैं बहुत प्यासा हूँ, मैं बहुत प्यासा हूँ। ये कहना था। जालिम उमर साद ने जालिम हुरमला से कहा कि इक्ता कलाम अल हुसैन। बस दोस्तों उसने तीर निकाला। आपको मालूम है जब हुरमला तीर चलाता था, ये जालिम का तीर 7 लोहे की 7 लोहे की दीवारों को चीरता हुआ जाता था।
ये जालिम चुना गया अली असगर के सूखे गले के लिए। बस उसने तीर जोड़ा, हुसैन के हाथ में असगर ऐसे जालिम उर्मुला का तीर चला, अजीज हुसैन के हाथ में अली असगर मुनक़लिब हो गए। इमाम ने आसमान की तरफ देखा और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हुसैन ने अबा का दामन उड़ा के वापस क़ैमे की तरफ चले, ये कहते जाते थे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। ये सोच रहे थे कि अब जाके रबाब को क्या बताऊंगा। अरे जब खैमे के दरवाजे पे पहुंचे तो माँ रबाब इंतजार में खड़ी हुई थी। रबाब ने जैसे ही हुसैन को देखा कहा मौला मेरा बच्चा पानी पी चुका। अरे हुसैन जवाब ना दे। हुसैन ने कहा रबाब वादा करो सब्र करोगी। बीबी ने कहा मैं वादा करती हूँ। हुसैन ने अबा के दामन को हटा दिया। बस दोस्तों माँ की चीख निकल गई कि हाय अली असगर शी कुड बिलीव। उनको यकीन नहीं आया कि हाय मेरे बच्चे को जिंदा कर दिए। रबाब ने अली असगर को लिया और लेके कहा मेरे लाल। अरे अभी तक मुस्कुरा रहे थे, बेटा ये क्या गजब हो गया। इलाही व सैयदी व मौलाया परवरदिगार, मेरे शहजादे का वास्ता, मेरे शहजादे अली असगर का वास्ता, अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा। हमारी ये मजलिस मजलूम बीबी ज़हरा की बारगाह में कबूल हो जाए। शहजादे अली असगर का वास्ता, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। बीबी का वास्ता, मेरे शहजादे अली असगर का वास्ता, जितने बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत कामिला दे। जो बीमारियाँ जिस्मों में उसको दूर कर दे। हर आने वाली बीमारी से महफूज रख। किसी का मोहताज नहीं बनाना सिवाय तेरे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाह जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमज़ा और अहले बैत की ख़बरों पर साया करके रोशन कर दे। सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा। फर्जंद मजलूम बीबी ज़हरा मेरे इमाम ज़माना को सलामत रख। इमाम की सलामती के सदक़े में सबको सलामत रख। मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको मौला के नासिरों में शुमार फरमा। हमारे सारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। जिन्होंने आज की मजलिस का स्पॉन्सर किया अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकत दे, उनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। ताहिर मोमिन भाई को के दर्जात को बुलंद फरमा। जितने अल-असर में बैठ के मेरी मजलिस सुन रहे अल्लाह इनके घरों में और पूरे कैलिफोर्निया में और पूरी दुनिया में जैसा मौला हुसैन का चाहने वाला है अल्लाह उसके घरों में बरकत नाजिल फरमा। एक सूरह फातिहा आज की मजलिस के स्पॉन्सर्स जो भी हैं उनके सारे मरहूमीन के लिए, हमारे कुमैल भाई के वालिद ताहिर मोमिन के लिए और अपने अपने सारे मरहूमीन के लिए सूरह, और मेरे वालिदैन के लिए, मेरी अहलिया के लिए एक सूरह फातिहा। या हुसैन या मेरे असगर कहाँ हो आ जाओ। मेरे असगर कहाँ हो आ जाओ। रात का वक्त होने वाला है। मेरे असगर कहाँ हो आ जाओ। पानी पीने गए थे मकतल में, लब दिखाने गए थे मकतल में, तीर खाने गए थे मकतल में, दिल दुखाने गए थे मकतल में। मेरे असगर कहाँ हो आ जाओ। रात का वक्त होने वाला है। मेरे असगर कहाँ हो आ जाओ।
और यूं अंधेरों में क्या जिया तुमने, यूं अंधेरों में की जिया तुमने। काम मुश्किल था जो किया तुमने, काम मुश्किल था जो किया तुमने। बुझ रहा था जो वो दिया तुमने, आंधियों में जला लिया तुमने। मेरे असगर कहाँ हो आ जाओ, रात का वक्त होने वाला है। और मेरे असगर ये क्या किया तुमने, तीर गर्दन पे खा लिया तुमने, तीर गर्दन पे खा लिया तुमने। मौत का जाम यूं पिया तुमने, हंस के सबको रुला दिया तुमने। मेरे असगर कहाँ हो आ जाओ, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। ऐ आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। मेरे लाडले कहाँ हो, मेरे लाडले कहाँ हो, सीने तुम्हें लगाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। बेटा तुम्हारा कातिल मेरे सामने खड़ा है, जाने क्यों हंस रहा है। चादर भी लुट चुकी है, मुंह किस तरह छुपाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ। तेरे झूले को सकीना रो रो के चूमती है, तुझ घर में ढूंढती है। तेरी मौत की खबर मैं कैसे उसे सुनाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ। मेरी जान जा रही है, ये सोच सोच असगर, इस फूल से गले पर
ये तीर कैसे झेला बहनों को क्या बताऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आ जाओ रे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ। झूले के साथ बेटा मेरे हाथ झल गए हैं, जालिम भी हंस रहे हैं। तेरी आखिरी निशानी है, किस तरह से बचाऊं, असगर में तेरी माँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ। नेज़े से गिर रहा है नन्हा सा सर तुम्हारा, दिल रोता है हमारा। मेरे हाथ तो बंधे हैं, सर किस तरह उठाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ। जब रात होगी रन में हो जाएगा अंधेरा, डरना नहीं है बेटा, दादी कहेंगी तुमसे, आ मैं तुझे सुलाऊं, असगर में तेरी माँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। मेरे लाडले कहाँ हो, मेरे लाडले कहाँ हो, सीने तुम्हें लगाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या या हुसैन, हुसैन, या हुसैन। हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। कहती थी ये माँ खून भरी मैयत से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शहानी, अफसोस के रासाई न तुझको ये जवानी, कैसा था मुकद्दर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। इतना तो जरा ठहरो तो मैं दूल्हा बना लूं, ऐसे एक झलक सहर के सुवरा को दिखा लूं, बेचैन थी खावर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। 18 बरस
पाल के परवान चढ़ाया, वो गैसुए वाला है मेरा खून में नहाया। ये क्या हुआ दिलबर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी, मर जाएगी सुगरा जो खबर तेरी सुनेगी। अब क्या करूं जी कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। कहती थी ये माँ हमारी मैयत से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शहानी, अफसोस के रासाई न तुझ को ये जवानी, कैसा था मुकद्दर, हाय हाय अली अकबर। इतना तो जरा ठहरो तो मैं दूल्हा बना लूं, बस एक झलक सहरे की सुगरा को दिखा दूं। बेचैन थी खावर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। कहती थी ये माँ हमारी मैयत से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, Yo, या sing, yo, हुसैन। sing, yo, 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 buzz, yo, buzz, yo, buzz, yo, buzz, yo, buzz, yo, buzz, fight Sakina, hot God, fight Sakina, hot God, fight Sakina, hot God, yo, sing, yo, sing, yo, sing, yo, sing, yo, sing, yo, sing, Hussein, 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 Hussein. Hussein, Hussein, Allahumma salli ala Muhammad. Dua Faraj. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi azm al-bala wa barh al-khafa wa ankashaf al-ghita wa ankata al-raja wa zakat al-ardu wa manat as-sama wa anta al-musta'anu wa ilayka al-mushtaka wa ilayka al-mawlu fi shiddati wa rafqa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa lil amri alladhina farasta alayna ta'atahum وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد Hazrat Hazrat Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ya Abid Fazl Abbas ibn Amir al-Mu'minina. Assalamu alaikum ya ibn Sayyid al-Wasina. Assalamu alaikum ayyuhal Abdul Salihul Mutiyu illallahi wa alayhi rasulihi. Assalamu alaikum ya Afzal Zala Shahade. Assalamu alaikum Jami'u wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. Hazrat Imam Hussain alayhi salam. Assalamu alaikum ya Abu Abdullah. Assalamu alaikum ya ibn Rasulullah. Assalamu alaikum ya ibn Amir al-Mu'mineen.
Assalamu alaikum ya ibn Fatima Zahra. Assalamu alaikum ya Abul Fazl Abbas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa Hazrat Imam Ali ibn Musa Rida. Assalamu alaikum ya Gharib al-Ghurba. Assalamu alaikum ya Ali ibn Musa Rida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hazrat Imam Mahdi alayhi salam. Assalamu alaikum ya Sahib al-Asr wa Zaman. Assalamu alaikum ya Imam al-Ins wa Jan. Assalamu alaikum wa alayka ya Shaykh al-Quran. Al-Aman, Al-Aman, Al-Aman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa jufrizim. Dua hujjat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyika hujjatin al-Hasan. Salawatuka alayhi wa ala abai. Fi hazi sa wa fi kulli sa. Waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasira. ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل thank you for attending the program. On Thursday day is Ashura, so we'll be having Amal starting at 10:30 in the morning. So we'll all be in person. And then following that, there's going to be a Julus that's going to be held at Robin Park or Marina Park right next to Marina High School in Huntington Beach. After the Julus, there's going to be a story of Imam Hussein leading into preparation for Fakhr Shibni. So please come join us. Asking the volunteers, please RSVP ahead of time. Ask them out by. And now let's please recite Surah Fatihas for the Muharrams of Zaid family, Sagarwala family, Muqaddam family, the Reza family, Qasim Ali family, the Gahar family, the Shah family, Dosa family, Mirza family, Basari family, Shirazi family, Hadi family, Heather Ali Charania and his family, Tahir Momin and his family, and Muminat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bismillahir-Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir-Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir-Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa jufrizim.